standings. Northern have proved to be a formidable batting outfit. A target of 201 would have proved tough for most teams. But Hyder Ali made it look easy as they overcame home city Central Punjab in their last game. Yeah, time for that one. Big one. Their opponents Sindh will be looking to strike back after losing to KP. Oh, smash. Their first loss after 3 straight wins. The winner will end the day on the top of the table. हेलो एंड गुड इवनिंग। मैच 14 तैयार है, नॉर्दर्न वर्सेस जीएफएस सिंध, और हम आपके साथ मौजूद लाइव फ्रॉम पिंडी क्रिकेट स्टेडियम। पॉइंट्स टेबल पे एक नजर डालते चलते हैं। आज मुकाबला है टॉप 2 टीम्स का, और जो भी आज मैच जीतेगा वो नंबर 1 पोजीशन पे आज की शाम खत्म करेगा। वेलकम आप सभी को यहां पर, और एक बड़ा मजेदार मुकाबला होने वाला है। दोनों टीमों का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, दोनों बड़े अच्छे लग रहे हैं, दोनों के यूनिट्स बड़े स्ट्रांग हैं, बॉलिंग बैटिंग। फर्क सिर्फ इतना है कि येस्टरडे नॉर्दर्न ने बड़ा शानदार मैच जीता, सेंट्रल पंजाब के अगेंस्ट 200 चेज किया, जबकि सिंध थोड़ा सा बिलो पार नजर आया और अपनी पहली हार जो है वो उनको सामना करना पड़ा। मेरे साथ मरीना मौजूद है। अब कल की बात हो गई, कल पे ये कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ जा रहा है नॉर्दर्न। पहले उनकी बात करते हैं। 200 चेज करना किसी भी पिच पे आसान नहीं होता, बिल्कुल आसान नहीं होता, और स्पेशली अगर बीच में इनके लैप्सेस हो रहे थे बैटिंग में इनिशियली, लेकिन उसके बाद जिस तरह की इनिंग्स कल इन्होंने खेली, हैदर अली वाज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ नॉर्दर्न, और जिस तरह की इनिंग्स इन्होंने खेली, एंड ऑब्वियसली बोर्ड लगा हो 200 प्लस का तो उस पर प्रेशर आता ही आता है, बट द वे दे अप्रोच दैट रन चेज वाज मैग्निफिसेंट। सिंध की बात करेंगे अगर, तो सिंध जो है थोड़ा सा कल ब्रेन फेड हुआ। एक ओवर में जो 2 विकेट्स गिरी आसिफ आफरीदी की, उसके बाद से वो रिकवरी मोड में आ ही नहीं पाए। आज क्या करना चाहिए सिंध को, अगर हम एक नटशेल में बात करें, क्या डिफरेंट करें कि आज फाइट हो? देखिए, ऑन पेपर दोनों टीम्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, बट आज एक्सिक्यूशन किसकी अच्छी होगी वो गेम को लेके जाएगा। सिंध ने डिफेंड भी किया है, सक्सेसफुली चेज भी किया है अभी तक, तो थोड़ा सा माइंडसेट उनका इस चीज़ पे होगा कि दे कैन डू बोथ। लेकिन ऑब्वियसली आज लैप्सेस और कोलैप्सेस का टाइम नहीं है सिंध के लिए, दे हैव टू बी स्पॉट ऑन। चलिए, 325 रन बने हैं इस पिच पर। देखते हैं कि माइक हैजमिन क्या बताते हैं इस मैच के लिए। Make sure you don't, there's a little spot there, just a little, that's good, all good, looking good there. Boys are hard at work there, so we're getting organised for the second game. I just want to point out one thing. Since we had the 2-day break, which the ground staff had an opportunity to sprinkle this square and just liven it up, just freshen it up a little bit, 3 occasions, 175 has been chased down. So these tracks are now really good. I wanted to have a close look at this surface because this game, the next one, 1 and 2, is really important. And I think what's going to happen on this one, there is the odd opportunity, I think, for the spinners to get involved. There was 1 or 2 deliveries that were just stopping around the place in the previous game. However, the runs were scored. I think the secret when you're batting is not to get too far ahead of yourself. I think set targets at 10 overs. I think make sure also that you have wickets in hand at the end so you can cut loose at the end. But I think the spinners will have a say here, and there's plenty of quality spinners in this game. And I think there's also seamers that are very experienced, and that's going to be key here with a couple of blokes who love giving it a real whirl because the bounce here is going to be good also. So I think we're up for a really good night of T20 cricket. This will be fun to watch. All right, spin will have a say. तो स्पिनर्स की तो फौज है इस मैच में, क्योंकि दोनों तरफ ही स्पिनर्स मौजूद हैं। जाहिद महमूद हैं, दानिश अजीज, इमाद वसीम, नवाज, शादाब खुद। बिल्कुल, बट एक चीज़ मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि पिछली बार जब सिंध नॉर्दर्न के सामने आया था, जो क्रूशल विकेट्स थी सिंध की, जो मोस्ट वैल्यूड बैटर्स थे नॉर्दर्न की, वो सिंध के स्पिनर्स ने निकाली थी, तो उनका रोज आज भी क्रूशल होगा। चलिए ठीक है, तो अब देखते हैं कि कप्तान क्या डिसाइड करते हैं। बाजिद के साथ हैं सरफराज और शादाब। The clash of the table toppers, we're in for an exciting game. Sarfraz and Shadab, the 2 captains. Iftikhar Ahmed, the match referee, I believe. Sarfraz has the coin, Shadab has the coin. Tails. Tails is the call. Heads it is. Shadab, क्या करेंगे और क्यों? बिस्मिल्लाह, बाज़ी भाई हम बॉलिंग करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे टोटल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है पहले इनिंग में, और कोशिश करेंगे कि इनको जल्दी से रिस्ट्रिक्ट करें, और जिस तरह की हमारे बॉलिंग लाइनअप है उस हिसाब से कोशिश करेंगे, क्योंकि आज का पिच दूसरा दिन है, अच्छा पिच खेल रहा है, तो 160 के अंडर करें।
जीएफएस सिंध की बहुत अच्छी फॉर्म लगी है सरफराज, लेकिन जब मैच हारते हैं तो अफसोस ज़रूर होता है, तो वो आप करेक्ट करने की कोशिश करेंगे? जी बाजिद बिल्कुल ऐसा ही है, और हमने कोशिश की कि उस मैच से पॉजिटिव चीज़ें निकालें। काफ़ी डाउन होने के बाद हमने अच्छा स्कोर बोर्ड पर सेट किया था, तो ये कि बड़ा पॉजिटिव है, और उस मैच को भूल के अगले मैचों की तरफ फोकस है। आज के मैच में कोशिश करेंगे अच्छा खेलें एज अ टीम। शादाब, नॉर्दर्न मतलब आपका हर रोज़ ही मैच हो रहा है, आप तो चाहेंगे कि सुबह शाम मैच हो, जिस किस्म की टीम की फॉर्म लगी हुई है? हाँ, जिस तरह की फॉर्म लग रही, कोशिश कर रहे हैं कि सुबह दोपहर 2 ही मैच होते रहे, क्योंकि जल्दी जल्दी मैच ख़त्म हो जाए। नहीं, बिल्कुल काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि बैक टू बैक तीसरा दिन है, हम तीसरा मैच खेल रहे हैं, तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एज ए प्रोफेशनल आपको रिकवरी करनी पड़ती है और ख़ुद को रेडी करना पड़ता है। तो होपफुली फास्ट बॉलर अच्छे रिदम में नज़र आए। ये बताएं कि मुश्किल हो रहा है पहले जब आप बैटिंग करते हैं स्कोर करने का, प्लस ये बताएं कि जब बॉलिंग करेंगे तो वो डिफेंड कैसे होगा? भाई बड़ा सिंपल है कि अगर 170 175 प्लस स्कोर करते हैं तो जितनी भी अच्छी पिच हो आपको विकेटें लेनी पड़ेंगी, और विकेटें लेंगे तो आप मैच में वापस आएंगे, क्योंकि जिस तरह का अच्छा पिच चल रहा है, अगर आप विकेट नहीं लेंगे तो आप मैच में बचाना आपका मुश्किल है। तो कोशिश करेंगे हम भी कि बड़ा स्कोर इस पर सेट करें और अर्ली स्ट्राइक करके मैच को जीतें। आपके लिहाज से विकेट टेकिंग ऑप्शन सबसे ज़्यादा कौन सी है इस पिच पे? हमारी टीम के हिसाब से अगर आप पूछते हैं, हमारे पास देखें जाहिद महमूद हैं, ऊपर से हसनैन अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, शाहनवाज दानी है, रुमान नई से हमारे पास अच्छे खासे विकेटिंग ऑप्शन है, तो हम कोशिश करेंगे कि इनसे स्ट्राइक करवाएं। शादाब, आपकी टीम में कोई चेंजेस? जी, आज सोहेल की जगह सुलेमान इरशाद खेले। सरफराज, आपकी टीम में कोई चेंजेस? सेम टीम है। Same team for GFS. So Northern have won the toss and elected to bowl. चलिए, नॉर्दर्न ने डिसाइड किया कि वो पहले फील्डिंग करेंगे। एक तब्दीली लाए हैं, अच्छा चेंज है। सलमान इरशाद जिनका ताल्लुक कोटली से है, बड़े उम्दा बॉलिंग करते हैं, सोहेल तनवीर की जगह टीम में आए हैं, और सिंध ने कहा कि हम वैसे ही खेलेंगे। क्विक सवाल आपसे पूछता हूं, कोई चेंज नहीं है। कल इंटरव्यू में कहा खुरम मंजूर ने, जरा टफ है 3 नंबर पर बैटिंग करना, देखना चाहेंगी कि वो ओपन आए और शायद मे बी शान मसूद सैक्रिफाइस करे 3 नंबर? आज के मैच में डेफिनेटली देखना चाहूँगी, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं शान मसूद, और पावर प्ले को यूटिलाइज करना नॉर्दर्न के खिलाफ जो है वो बहुत क्रूशल होगा। सो आई वुड लव खुरम मंजूर टू टेक अप द पोजीशन। सलमान इरशाद भी अच्छी इंक्लूजन है, स्लिंगर हैं, बड़ा अच्छा तेज गेंद करते हैं, यॉर्कर बड़ा पक्का है उनका। बिल्कुल, ये पेस वेरिएशन और जो है वो मैटर करती है, बट अगेन आई बीन सेइंग दिस कि वेरिएशन भी और पेस के साथ जो आप बॉलिंग करते हैं, लाइन एंड लेंथ हैज़ टू बी स्पॉट ऑन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बैटर आपको स्पेशली इस किस्म की आउटफील्ड और विकेट पे बिल्कुल नहीं बख्शेगा। हाँ, सही बात है। थैंक यू मरीना। ये बात अभी सरफराज ने भी कही कि 175 का जो ये टोटल है, ये ज़रा टफ होगा। इनफैक्ट अगर मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँ यहाँ पे कि 175 चेज हो गया है, 2 बार हमने देखा, क्या इनफ है? सिंध डिफेंड कर पाएगा इसको? आई थिंक कर पाएगा। थोड़ा सा अभी उस तरह का विकेट नहीं है जैसा हमें पिछले मैच में देखने को मिला था। आज थोड़ा सा हेल्प मिलेगा आई एम श्योर कि स्पिनर्स को, बट दे हैव टू बॉल इन राइट एरिया, सो लेट्स सी। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट एरियाज। कल हमने देखा सिंध ने ओवर पिच जरा किया नए बॉल के साथ, और हसनैन को 28 रन पड़े थे एक ओवर में। वो कॉस्ट कर जाता है जब आपका टोटल इतना बड़ा ना और आप डिफेंड करने जा रहे हो। बहरहाल, नया दिन, नया मैच, नया इनकाउंटर। ये जो दोनों टीमें हैं टेबल टॉपर्स हैं। नॉर्दर्न बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है, और उतना ही अच्छा फॉर्म लगा हुआ है इस वक्त GFS सिंध का, और कोशिश इनकी यही होगी कि आज अपने 2 पॉइंट्स हासिल करें और टेबल के टॉप पर चले जाएं। सिंध तो ऑलरेडी है, वो मेंटेन करेगा। नॉर्दर्न के पास 2 पॉइंट्स हासिल करके 2 से 1 पे जाने की एक चांस है। चलिए देखते हैं होता है क्या।
Been looking forward to this one. 1 and 2 of the table. This is going to be an absolute beauty. Northern versus GFS Sindh. And just the news of the toss is that Northern won the toss and they've elected to bowl first. Shah Masood is one of the opening batsmen, and this one's the dasher, Shazil Khan. He'll like to play his shots right from ball one, basically. We've seen that throughout his entire career. And if you look at his strike rate at 140, that certainly tells a story. 13 50s and 300s. Shah Masood will probably look to give him as much strike as possible. He did that the other day, and unfortunately for Shah Masood, he was there for a while and just didn't kick on when he was ready to do so. Salman Ashad is going to be starting proceedings with the ball. Best of 4 for 30. Sana's alongside me. Sana, what are your thoughts? The first thought that comes to mind, Mike, you said that Shan would want Sharjeel to take the strike, and it's strange that he doesn't want to face the first ball. Sometimes when batters decide that, I don't know. I mean, that can be still looked at. Shan is struggling, so maybe Sharjeel would want to take that strike. And Salman Irshad, we were talking about the bowler. He's been really good in the recent tournaments, so I'm quite excited that he's getting this opportunity to display his talent also. Yeah, I guess maybe Shazil hadn't seen a lot of him. Perhaps Masood has seen a bit more. That's one of the reasons I guess that can happen. Sarfraz, by the way, the Sindh captain, said he wanted 170 on the board. Now, 170 has been chased down 3 times. 175 has been chased down 3 times since we've had that 2-day break when the tracks have been freshened up a little bit. This track is a good one. It was just holding up occasionally, so it's not a complete batting paradise. Slip in position. Here we go. Eased into the covers for 1 to get going for himself and the team. Good start both by Northern. Good ball there by Salman Irshad. He's come in for Sohail Tanveer. This is the 3rd match on the go for Northern. So Sohail Tanveer has been rested and Salman has got this opportunity. Tanveer's been a bloke at the top who's always done the job. So he's got some big boots to fill. Wish him all the best. Good opportunity for him. Going to be on the button for this guy. Certainly got a bit of a different action. If you haven't seen him before, he'll take a couple of balls just to get used to. Just watch that ball disappear behind his body. That's one of the important things. Just there. That's where it gets a bit tricky as a batsman. So a batsman, as a bowler's running in, always likes to see the ball in the bowler's hand as he's coming all the way through to him. But if the ball suddenly disappears behind the bowler's back with this action, it can rush you. That's leg side. And he did rush batters with the new ball, and with this slinging action, he was able to execute the Yorkers really well also. And this time a bit too quick for Sharjeel. Good decision by the umpire. So just to finish that, batsmen like to be in rhythm of the game when they first get out there. So if they see the ball in the bowler's hand as the bowler's running in, they automatically find some sort of cadence. There's the man's been rested, by the way. And it's all good if you're seeing it all the time in the action and suddenly bang behind your back. That's a bit tricky. Now, Shazil, he's not a big mover of his feet, but you can see even with that shot there, he was a bit sluggish because he picked the ball up late, and that's what happens. I agree. It's a very good observation, and with this slinging action, he's not even giving much room to Sharjeel also. What Sharjeel usually likes, he likes to throw his hands on the offside, loves the ball going down the leg side. So good start. Beautifully bowled. Nice work. Good tight lines there. Speed is also decent, 133 kilometers per hour. Let's look at that. Perfect line, perfect length. If you have a close look also at Shazil's eyes,
He's waiting for one that he can recognise and get a bit of bat on and get it away to feel better. Yes, and he has this open look at that, just determination. Of course, the focus is there. He's watching the ball till the end, and that's why he's been so good. Not taking any risks. That's dead right if you haven't faced someone before for a while or haven't seen much of him. Smash that on the onside, so he's got enough willow on it. He's got a pretty heavy bat. I think it's going to go. Yep, it does. That's the way he likes to go about things. It's a pretty good over, though. 6 off it. First over done. Good over. Sallu bhai. Good luck, Harry. So there's a look at the two sides, just the one change that we talked about. Plenty of gun players actually in both teams, so this is going to be a nice little clash. Hyder Ali's been in really good form with the bat. Shadab Khan's there. Ahmad Wazim's there. This bloke is there. Haris Rauf. He bowled one ball in, one over, I should say, in the power play the other day, then bowled 3 at the death. Wonder if that's going to be the role that he's going to be looking to do. See how he goes. I like this guy. And that's been given a wide. And that's the boundary of the last over. It was a shot that was forced. The ball was not there, but Sharjeel Khan forced it. And the fielder could have done better. He had his hand on the ball, but it didn't do much as the outfield was really fast. So wide first up. Oh, that's not a bad shout. Yep, that's in line. Haris Rauf was struck straight away. Look at that smile. Here's a seriously good cricketer, this guy. And Shan Masood is struggling. The umpire was very quick to make his decision again. Rauf being given the new ball and playing across the line. Head is falling down, and umpire has given it out. A little bit of a twirl at the end of his pirouette, at the end of his follow-through. Shah Masood is a dangerous player. He's gone for 1 now. 7 for 1 it is. So 1 wicket down already. That's what teams like to do. They like to strike right at the top. Kura Mansour is a very good player as well. He's been in good form. And Haris Rauf being given the new ball. Just look at that. Pitched inside leg, hitting leg. Shan Masood given out. Haris Rauf enjoyed that. And a bit of shape as well. I'm not going to call it swing. I'm going to call it a bit of shape. Nicely bowled. Oh, that is a beauty as well. How about that first up? 143 kilometers per hour with that shape.
2 slips in position. Not easy to face that. Just look at that. Opened the batter up. It's the sort of ball you don't want to get. As soon as you arrive. Top bowling from Haris Rauf. Credit to Shadab also. Using him with the new ball, we generally see him bowling after the power play. Some catches. Had a bit of a dip at that one. It was a bit wide. Big follow through and a big smile from the quick. That shape again, seam upright. Great movement. The lengths are really good. Impressive bowling. I'm calling it swing now. I think that LBW just shaped a little bit. Now this one is swinging. And because it's swinging so much, the field is 7-2. Only 2 fielders on the leg side, 7 on the off side, 2 slips, 1 gully. Oh my goodness, that is an absolute beauty, acknowledged by the batsman. That is pitched on off stump and it's gone just past the top of off. And after watching these 4 deliveries, my only question is why is not being used with the new ball more? Now what's going through the batsman's mind? He's probably thinking, okay, let's get this over with. 2 more balls, let's just get this done. Yes, Sindh would not like to lose Khurram Manzoor's wicket in this over. Eased away and he's off the mark, so that'll be a little bit of relief, I'm sure. Not just the fact that he's off the mark, that he's down the non-striker's end. Haris Rauf causing trouble to the batters. Just look at those speeds, 142. It's all above 140. How good is that? That's superb. And the best thing that Sindh can do against someone like Haris Rauf, who will probably, or certainly should, get another over after this one. That's maybe what the captain's having a bit of a chat about at the moment, just to get his thought process, because I'm sure it was initially just going to be 1, but you've got to get him 1 more after this. I would think that the best thing that Sindh can do against quality bowling is to, with the left and right hand combination, is to try and get these ones around the place and the odd boundary, so that he has to change his line from time to time, every time the left and right hand batsman. Oh, it's nicely bowled. He's on the button again. That is a brilliant over. That is outstanding stuff. Picked up a wicket and just 2 runs. 8 for 1. Middle. Yes. Thank you. Sarfaraz at number 4 in that list. I wonder if he'll stay there. He is someone who likes to work the spinners. He missed out in the last game, but a couple of 40s in the 2 previous games. It's his first duck in 42 games, actually, in T20s. Oh, that's a beautiful shot. My goodness, that's magnificent. And Khurram Manzoor having no problem against Salman Irshad this time. Just look at that. Excellent balance. Great contact. That high elbow and a check shot for the photographers. His technique is quite interesting. Very rarely do you see batsmen staying dead still. You would think against a ball like this with this action, you'd perhaps want to have some sort of trigger movement so your feet are going, but clearly his technique says no, I'm just going to dead still. Plays that nicely, really good balance. Touch and turn back for a second. They might be able to think about 3. A little bit of blind running there from Mansoor actually, but safely home is Shazil. Good running there by both the batters. 3 runs taken. And that's the first over. Shan Masood had to go, and after that, that shape, length and swing. Accurate bowling.
causing trouble to the batters and using the field also. He's had slips and he's being praised by all and supported by all the fielders also. I'd love to know what that conversation was about. It was a bit one way by the looks of things. It might have been, I'm going to kill you, Captain, if you take me off. Slower ball, cleverly bowled. Plenty of excitement in the middle. Don't forget to jump behind the Pakistan boys for the T20 World Cup. You can create an account at shop.pcb.com.pk. That's a merchandise store to get a chance to win a Pakistan cricket team signed by the Pakistan T20 World Cup squad. A shirt signed, I should say, not the team. Shirt signed. That's down the leg side, and that's gone for 4. 5 lucky winners, by the way, going to be announced after that offer ends on the 15th of October. Salman Irshad straying down the leg side. 4 leg byes. And it's really good to see Haris Rauf now talking to Salman Irshad. This is his first outing of the tournament, and he has gone for 11 runs in the first 4 deliveries. So good to see the captain and the senior bowler supporting him. Oh, that's picked up. That's picked up superbly. It's almost taken out the buggy. And that's where Sharjeel Khan likes the ball to be, on his legs. The moment you are going to stray on his leg side, he's going to punish you. That's what he did to Salman Irshad on this occasion also. And with the slingy action, it's easier to do that. Amongst the batsmen who've got going in this edition of the T20 Cup, National T20 Cup, his strike rate is 158, and that is the highest strike rate in this edition. So it's good stuff from Sharjeel. Good thing about his batting is that he knows his role and he sticks with it. He's consistent with the way he plays his cricket. That was nicely played as well. Scampered through for a single, good running. They're going to stay at just the 1. And it's a very good over. 16 off it for Sindh. 24 for 1. बॉडी खोल खोल के जंक्शन में मेरा ब्राज छोड़ बॉडी खोल कर रख. So there's that career strike rate of 140 for Sharjeel Khan and 2,700 runs. Mansoor at 121. Shakil at 130. Sarfraz, a lot of games. 3,500 runs, bang on the dot, with a really good strike rate at 129. And Danish Aziz, strike rate of 140 for Danish. Ah, there is a change. So he didn't get his way. I'm sure he would have wanted one more. Well, I wanted him at one more anyway. Musa it is. Yes, I'm not too sure about this change. Musa Khan, he has been quite expensive, and Salman Irshad has been expensive in the last over. So in the 4th over, you would want to bring things back. Musa Khan has been expensive in the last few matches. So this can be a risk. He's going at just a shade under 11 per over at the moment in this edition, but he's a trier. He keeps running in all the time and gives 100% for his captain and his team. Got to admire that. That's square, and that's 4. There's no one there. And that's the risk with Musa Khan. He offers space, and the moment he loses the line, it's easy to take him to the cleaners. The problem he's got is he has no confidence.
Now there's 2 outside the circle in the power play in the first 6 overs. There's a man at third man and also a man at deep backward square on the leg side. And the captain, I think, has got to make some sort of change here and have a different plan. He's brought the third man actually inside the circle. There's more protection on the leg side for Shazil on strike. So third man and final over inside the circle. He's got to be dead straight or he's got to bowl slow balls. That's crashed away for another boundary. And that's the issue. The pace, the length, all in favor of Sharjeel Khan. I don't understand that extra protection on the leg side. If you're going to be bowling the line that he's bowling, which is surely the line that most people should be bowling, the man on the leg side shouldn't come into play, actually. You've got to have protection there. He's going to do that all day. Musa Khan is struggling, and Shadab Khan had the option of bringing Haris Rauf back. He had the option of Nawaz, who has been bowling really well in the power play. He had the option of Imad Wasim. There's no change in the field. This is too much of a pressure situation, I think, for Musa Khan after those boundaries. So if there was someone there, well, I think someone should have been from ball 1 of this over, actually, because of the natural line that he bowls. That would have been 3 1s. It's not, it's 3 4s. The captain hasn't got this right. Too much pressure on Musa Khan, too much we are asking of him when he's giving away 11 runs outside of power play. Asking him to bowl with 2 fielders on the leg side is not the best thing to do. And Sharjeel Khan understands that. And he's exploiting that. But now there's no change either. So they're staying with this. So he's either got to be absolutely dead straight at the stumps, or he's got to bowl the slow ball with this field. And that's not his natural game. He's a pace bowler and he bowls that line on off stump and just outside. Oh, it's down. My goodness, that would have been a blinder, a catch. Asif Ali is the one that's put that one down. It's gone for 4 in the end. Would have been a beauty, but gee, he could have done with that, Musa Khan. And this catch should have been taken. Big wicket of Sharjeel. Asif Khan, the fielder. It was a difficult chance, no doubt. But when you are selected in the Pakistan team, the World Cup squad, we expect more of you. Yeah, bowler also, I think, expected more. Especially after the three 4s, it's he's desperate. He's got a field placing on the leg side for bad balls. I don't understand his field placing at all. It's a dot ball to finish. Captain, you've got to get your act into gear here, because that wasn't good enough, I don't think. 16 off the over. 4 gone, 40 for 1. ये नॉर्दर्न के करियर स्टैट्स T20 के नंबर ऑफ मैचेस जो खेले हुए हैं, इनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, स्पेशली जो टेबल के मिडिल में, सेंटर में आप देख रहे हैं. 100 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा मैचेस. इमाज वसीम 235. उसके अलावा हमने अभी सिंध के देखे थे, उसमें सरफराज हैं टॉप पे, रोमन रईस के 99 हैं. रन्स और मिसफील्ड, ऐसा देखा नहीं जाता यूजुअली नॉर्दर्न के फील्डर से, लेकिन कुछ प्रेशर आ गया है. पिछले ओवर में 16 रन 4 चौके पड़े, तो फील्ड थोड़ा सा जो है वो बौखला सी गई है. पिछला ओवर जो एक्सपेंसिव रहा मोहम्मद मूसा का, ये चौकों की बौछार. पहला शॉट स्क्वायर ड्राइव, दूसरा भी उसी जगह पर, उसके बाद ऊंचा खेला सेम उसी रीजन में, फिर पुल कर दिया, और ये चांस था यहाँ. आसिफ अली इसको मैसअप कर गए और 4 हो गया.
हारिस रऊफ देखा यह जा रहा है कि पिछले 1-2 मैचेस से नई गेंद को स्विंग करने में कामयाब हुए हैं। आउट स्विंग लेफ्ट हैंडर्स को ज़्यादातर इन स्विंग करते हैं, इसलिए हाथ खोलने में दिक्कत हो रही है। हारिस रऊफ यूजुअली पावर प्ले के बाद आते हैं, लेकिन इनको नया बॉल आज दिया है इनके कप्तान ने। आज स्पिन ऑप्शन नहीं लिया और इन्होंने गेंद बाहर निकाला है। उस स्पीड पर इन्होंने अवे मूवमेंट जो हासिल की है, स्क्वायर अप किया 2-3 बार खुर्रम मंजूर को। यार बहुत तेज बॉलिंग भी कर रहे हैं। आखिरी गेंद की जो रफ्तार थी 147 किलोमीटर फी घंटा रही। ये एक जमाने में 150 नंबर था इनकी जर्सी का। जब ये पाकिस्तान के लिए खेलते हैं तो इनकी कोशिश यही होती है कि 150 को ये बार बार आकर हिट करें। देखिए उसके करीब आ रहे हैं, 149 तक पहुंच गए। ये वो आखिरी ओवर जिसमें ये गेंद को सीम और स्विंग करने में कामयाब हुए। ये देखिए बड़ी अच्छी शेप है। जी हाँ, ये जो अवे मूवमेंट है ये बड़ी जबरदस्त। ये तो पूरा ही स्क्वायर अप कर दिया था, टॉप ऑफ स्टंप, कोई जवाब नहीं था। बड़े से बड़ा बैट्समैन इस पे चूक जाएगा। इस पेस के साथ ऐसा मूवमेंट मिले। पिछला गेंद 149 किलोमीटर फी घंटा था। नए बॉल के साथ काफी इंप्रेसिव शॉर्ट बॉल, और एक बार फिर तेज गेंद। यहाँ ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट इन्होंने भी खेली नहीं है। अब से 2 बरस पहले इनका जब डेब्यू हुआ था यहीं रावलपिंडी में केआरएल के मकाम पर, तो अपना पहला स्पेल करने के बाद ही ये कोई घबरा से गए थे कि वो टेप बॉल क्रिकेट से आए हैं। बराह रास्त पाकिस्तान सुपर लीग में हिस्सा लिया था लाहौर कलंदर्स के लिए। यही वजह है कि कई बार जो है नई गेंद को इनके साथ एक मसला था कि एक जगह पर गिरा नहीं पाते थे। सही लेंथ के साथ साथ लाइन के मसाइल थे। ओह, ये बहुत ही तेज गेंद था, तो बिल्कुल चढ़कर आया। बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला इनको कि इस को डक करते या इसके रास्ते से हटते। और ये बड़े बैट्समैन जो है 145 की स्पीड थी, सहलाएंगे भी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल नजरें हटा ली थी। बमुश्किल आखिर में गेंद उनके ग्लव को लगी। सिर्फ 3 ही फर्स्ट क्लास मैचेस अभी तक हारिस रऊफ ने खेले हैं। हालांकि ये पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड के साथ भी रहे। तो ये पाकिस्तान के जितने भी नौजवान बॉलर्स हैं इनको ज़रूरत है कि ये 1-1, 2-2 सीजन्स जो हैं पूरे खेलें। और एक और शानदार डिलीवरी, कोई जवाब नहीं था। और मंजूर को मुश्किल पेश आ रही है इस तेज रफ्तार बॉलर का सामना करते हुए। 5 के बाद 42 पर 1। बड़ा तेज पिछला ओवर किया है हारिस रऊफ ने, और 2 ओकेजन्स ऐसी आई जो आखिरी 2 बॉलें थी जहां खुर्रम मंजूर ने नजर हटा ली गेंद पे से और फिर डक भी नहीं कर पाए। आखिरी गेंद तो ऑलमोस्ट चेन एरिया के पास वाइजर पे लगी है जाकर। 149 तक स्पीड को लेकर गए। इस पिच में हमेशा से ही फास्ट बॉलर्स के लिए मदद रही है, उनको बाउंस मिलता है। ये देखिए पिछले ओवर में म्यूजिक फेस करना पड़ा। यहाँ आमतौर पर बैट्समैन शॉर्ट गेंद को खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन खुर्रम मंजूर के हेलमेट को हिट किया। यहाँ मुझे याद है 1994 में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच हुआ था, जब दोनों ही टीमें सुपर पावर्स क्रिकेट की और वसीम अकरम ने जिस तरह का स्टीव वॉ के खिलाफ स्पेल किया था,
पिंडी स्टेडियम का सबसे तेज तरीन स्पेल था और उसमें ज्यादातर बाउंसर्स ही थे। मिसफील्ड हुई लेकिन रन नहीं हासिल हुआ इस पे। थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, एक तरफ से इतनी तेज और शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, अब यहाँ मूसा को थोड़ा इस बात का ख्याल करना है कि जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है एक एंड से उसको किसी हद तक मेंटेन करें, क्योंकि अगर अपने साइड से रन लीक करेंगे तो फिर वो जो मकसद है पावर प्ले में स्कोर्स करने का वो हासिल हो जाएगा ऑपोजिशन को। इस ओवर में कोशिश जरूर रहेगी शर्जील की कि 1-2 बाउंड्रीज और लगें, 50 तो होना चाहिए पावर प्ले में। ऊंचा शॉट, ये 6 के लिए तो ना जाए लेकिन एक बाउंस के बाद चौका जरूर हासिल होगा। अपनी मनमानी करते हुए और बहुत ही आराम से एक और 4 हासिल किया मूसा की बॉलिंग के अगेंस्ट। यहाँ इस पावर प्ले का ये पूरा फायदा उठा रहे हैं, 7वां चौका लगाया। हालांकि गेंद बल्ले के निस्बतन ऊपरी हिस्से पर लगी थी लेकिन शर्जील बहुत ही अच्छे टाइमर हैं, 7वां चौका लगाया। 157 उनका स्ट्राइक रेट है और इनसे छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है शादाब खान को, ख़ास तौर पर उनके पेसर्स को, क्योंकि इनके पास 3 स्पिनर्स हैं और शर्जील जो हैं स्पिनर्स की तो बहुत पिटाई करते हैं, उनके खिलाफ ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं सेट होने के बाद। 11 रन्स का इकॉनमी है मूसा का इस टूर्नामेंट में, अभी तक का गालिबन सबसे ज्यादा ही होगा, या सबसे ज्यादा नहीं तो उस फहरिस्त में होगा जहां ज्यादा रन दिए हैं बॉलर्स ने। और ये गेंद फिर निकल गई, ये चौथी बार है तारिक साहब के इस एरिया में बड़े आराम से पेस का इस्तेमाल करते हुए एक और 4 हासिल किया है शर्जील ने। यहाँ ये ब्रेड एंड बटर है इनके लिए, शर्जील को अगर जरा सी भी आप विड्थ देंगे इस लेंथ के साथ तो फिर दिन भर यही होता रहेगा। सिर्फ अपने बल्ले का फेस ओपन करना था, देर से किया ताकि पॉइंट के फील्डर को बीट कर सकें। निस्फ सेंचुरी सिंध ने मुकम्मल की, इससे बेहतर आगाज नहीं हो सकता था विकेट गंवाने के बाद। अभी भी पावर प्ले की 3 गेंदें बाकी हैं। जो बैट्समैन जिन्होंने 100 रन बनाए हैं इस साल के नेशनल T20 में, उनमें सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट इस वक्त शर्जील का है, 157.74 इस मैच से पहले। रन आउट का चांस, डायरेक्ट हिट होती तो खुरम मंजूर को वापस जाना पड़ता। शुरू के मैचेस में नॉर्दर्न की फील्डिंग अच्छी थी, इनकी ग्राउंड फील्डिंग, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन से, शायद आज तीसरा मुसलसल मैच है कि इनकी जो फील्डर्स हैं वो सरनिगों कर रहे हैं इनके बॉलर्स को। देखिए बैकवर्ड पॉइंट पर यहाँ पर आए थे नासिर नवाज, विकेटों से ज्यादा दूर नहीं थे, गिव अप कर दिया था खुरम मंजूर ने। पाकिस्तान के फील्डर्स जो हैं पहले से तो इनकी फील्डिंग बेहतर हुई है, लेकिन ये फार एंड पर ज़्यादा इनकी डायरेक्ट थ्रो लगती है, ये महसूस किया गया। ये पॉइंट से या स्क्वायर लेग से ये बैटिंग एंड पर डायरेक्ट जो निशाना है ये कम लगता है पाकिस्तानियों को, क्योंकि वहां से एक स्टंप दिखती है, सामने से तीनों दिख जाती हैं। लेकिन हो सकता है ऐसा नोटिस किया आपने। एक और स्टैट मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद मूसा ने अब 8.5 ओवर कर दिए हैं इस नेशनल T20 में और 101 रन दे चुके हैं 8.5 ओवर में। इस हिसाब से इकॉनमी 13 से ज्यादा हो जाती है। लेकिन अच्छी चीज है कि यहां शादाब और हारिस रऊफ दोनों इनसे बात कर रहे हैं, को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि टीम बैक कर रही है उनको। पिछले ओवर में 16 रन मिले थे, इस बार 9 हुए हैं, जो कि इतना बुरा नहीं। फिनिश अच्छा करना होगा इस ओवर को। पावर प्ले की आखिरी बॉल, बहुत ही सीधा शॉट और कट ऑफ नहीं कर पाए। डाइव जरूर लगाई थी लेकिन एक और बाउंड्री के साथ ओवर खत्म हुआ। एक और ओवर जिसमें 13 हासिल हुए और सिंध 55, एक खिलाड़ी आउट।
पावर प्ले अपने अख्ताम को पहुंचा और इसका इशारा अभी अंपायर इम्तियाज इकबाल करेंगे हंसते हुए चेहरे के साथ। उनको लग रहा है अच्छा हुआ पावर प्ले आया अपने अख्ताम पर। ये जो नॉर्दर्न की टीम है थोड़ा सा सुकून का सांस लेगी। अब स्पिन को लेकर आए हैं शादाब, तो एक अलग स्ट्रेटजी है ये, पावर प्ले में नहीं लेके आए। अब इनके पास 3 स्पिनर्स हैं, खुद शादाब, इमाद और नवाज। गेम के पेस को स्लो करना है तो ये अच्छा हरबा होगा। हैरी को देखिएगा, इमाद से पहले नवाज को इस्तेमाल करते रहे शादाब खान। आज थोड़ा सा हैरी बीच में वो इमाद को पहले लेकर आए हैं, लेकिन इस वक्त इमाद को फायदा यह है कि 5 फील्डर उन्हें दायरे के बाहर मिलेंगे। शाबाश। पिछले ओवर की आखिरी गेंद जिस पे चौका हासिल किया और ये शॉट लगाया था खुरम मंजूर ने, को सीधा शॉट स्ट्रेट। कोशिश की थी हारिस रऊफ ने इसको रोकने की, लेकिन बड़ा कम चांस होता है मिड ऑन मिड ऑफ के लिए इतनी तेज शॉट को रोकना। यहाँ ये एक अच्छे बैट्समैन का शॉट था जो कि फॉर्म में है। इससे खुरम का एतमाद बहाल होगा जो हारिस के हाथों में मजरूह हुआ था जब उन्होंने 2 बाउंसर्स इनके लिए किए। स्पिनर्स का इम्तहान तो होगा, गो के मदद है इस पिच में। ये 50 रन की पार्टनरशिप भी हो गई खुरम मंजूर और शर्जील खान के दरमियान सिर्फ 31 गेंदों में, क्योंकि सिंध के बैट्समैन रिवायती तौर पर ये स्पिन के खिलाफ हमेशा अच्छा खेलते हैं, तो इसलिए आज ये बड़ा सख्त मुकाबला होने वाला है इनका। इन स्पिनर्स के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि 2-3 में से ऐसे स्पिनर जो बाएं हाथ से बॉलिंग करते हैं, तो शर्जील के सामने तो और भी मुश्किल हो सकती है। जी हाँ, ये इनके PSL के कप्तान भी हैं, तो इन्होंने खेला होगा इनको नेट्स में काफी, फिर पाकिस्तान के लिए भी एक दूसरे का सामना किया है। 2 साल इमाद वसीम ने नॉर्दर्न की कप्तानी भी की है। इनकी सालगिरह है आज, आप क्या तोहफा देना चाहेंगे? आसिफ अली चाहिए अपनी टीम को जीत का तोहफा जरूर देना चाहेंगे। आगाज तो अच्छा नहीं हुआ, जिस तरह कैच इन्होंने शर्जील का गिराया, डेंजर मैन का। ये अपनी टीम को जीत का तोहफा देंगे, आप इनको क्या तोहफा देंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ। सालगिरह है, मैं जाहिर है कि इनको मिल नहीं सकता क्योंकि ये बबल में है। मैं भिजवा दूंगा, आप फिक्र नहीं करें, आप तोहफा बताइए। अच्छा आगाज इमाद का, इस ओवर में सिर्फ 4 ही रन हासिल हुए, 7 ओवर्स के बाद 59, एक खिलाड़ी आउट। बड़े ओवर्स हासिल हुए इसमें, ज्यादातर अटैक मूसा की तरफ रहा GFS सिंध के बैट्समैन का। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आप आ सकते हैं ये मैच देखने के लिए रावलपिंडी में भी, और उसके बाद लाहौर का मरहला शुरू होने जा रहा है 6 अक्टूबर से। राइट आर्म रिस्ट स्पिन का वक्त है। शादाब खान बॉलिंग करने आ रहे हैं फार एंड से। उस दिन नॉर्दर्न नहीं सेंट्रल पंजाब का मैच चल रहा था, तो तमाशाइयों में कोई बैठा तो उन्होंने कहा बाबर आजम को देखने के लिए मैंने वैक्सीन लगवाया।
अच्छी बात है, ये भी सही है। ये एनालिस्ट टीम के ये तो आउट होगा, ये तो आउट है। पिछला पैर आज कुछ अलग ही मोड में नजर आया खुर्रम मंजूर। जब से वो तेज गेंद 2 बार लगी है, थोड़ा अपने आप में नहीं दिखे। सिमिलर डिसमिसल जैसे आज थोड़ी देर पहले आजम की देखी थी। जी हाँ, ये गुगली थी, स्वीप करने के बहुत शौकीन है, इस बार कनेक्ट नहीं कर सके और अंपायर साकिब खान का यही ख्याल था कि गेंद स्टंप्स की लाइन में लगी है। इन फॉर्म बैट्समैन खुर्रम मंजूर की विकेट हासिल की। अच्छा आगाज मिला शादाब खान को, 59 पर 2 सिंध। सऊद शकील खुर्रम मंजूर की जगह ले रहे हैं, क्योंकि खुर्रम मंजूर अभी कुछ लम्हे पहले ये कर बैठे। इन दिनों ज्यादा गुगली करते नहीं है शादाब खान। अंपायर को ज़ाहिर पहले देखना था कि गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में ही लगी है। खुर्रम मंजूर हालांकि ज्यादा खुश नजर नहीं आए। ये अच्छा शॉट खेल दिया, बहुत ज्यादा गेंद फाइन चली है। 4 रन्स के लिए मौका नहीं मिल सका नासिर नवाज को। बहुत ही शानदार इब्तिदा सऊद शकील की, जो इन दिनों भरपूर फॉर्म में है। बड़ा मुश्किल था, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग से दौड़ के आना पड़ा नासिर नवाज को। इन्होंने फाइन लेग नहीं लिया हुआ, जो अब आया है सर्कल के अंदर। तो इतना लंबा आर्क है उनको दौड़ के आने के लिए। आप देखेंगे उनको फ्रेम में अभी पीछे बॉल से हमेशा ही दूर थे, वो चांस नहीं था। दूसरा रन नहीं हासिल होगा। नॉर्दर्न एक अच्छी फील्डिंग साइड है और एक कलेक्टिव एफर्ट है इन लोगों का, जिसकी वजह से ये नंबर 2 पोजीशन पर हैं। ये टपाल्टी लम्हा है। तो मैं बात कर रहा था शादाब खान की, जब से इनको ग्रोइन और उसके बाद हैमस्ट्रिंग इंजरी का सामना रहा, ये गुगली करना कम हो गए थे, क्योंकि गुगली करते हुए इनका ज्यादा जो वजन है वो कमर पे पड़ता था। ये वाइड होनी चाहिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक ग्रूव में आ रहे हैं हम। शायद इनका ख्याल है कि गेंद पैड से लगती हुई गई। शादाब कहते हैं कि गालिबन हल्का सा लग कर गया है पैड को या ट्राउजर को। अंपायर का फैसला आखिरी होता है, वाइड का इशारा। चलो खुदी, वेल बोल्ड, शाबाश, एक्सीलेंट शेडी भाई। लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ यही लाइन ज्यादातर अपना रहे हैं। हालांकि गुगली मौसर होती है लेफ्ट हैंडर के खिलाफ इनकी, पहले ये स्लिप भी लिया करते थे। वेल बोल्ड, शाबाश। 8 ओवर्स के बाद 66, 2 खिलाड़ी आउट जीएफएस सिंध। Spin introduced after the power play, and they've just gone for
well, including this delivery, 12 runs. Excellent boy. There's been a theme developing throughout this national T20 that the spinners come on and more or less do a job where peg the batting side back, especially the team batting first. Punched off the back foot. Nice looking shot in the gap. Pick up a couple of runs. He does play quite nicely. Just this type of player you'd want to watch him bat. Good young player, Saud Shakil. Spin, taking some control. The flow of runs a little slower than in the power play when Musa was bowling. After Maroof bowled a great spell, that over where the ball was moving and the seam position, fantastic. And now control back after the power play. The carom ball this time too short and spanked out of the ground. Beautiful shot in his arc, 6 runs. Nicely played. शाबाश 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 मैडी भाई ये आजा Into the offside, call for 2, won't get this. Imad has used this delivery pretty well. This time slightly too short, and Sharjeel, well, he's just too good not to miss out. $78 for 2. Shadab 1 over for 7 and a wicket. Imad has gone for 16 now after that big hit from Sharjeel. Shadab's bowling well, although this one was a wide. But I just wanted to ask you, Bazid, was there a case to bowl a spinner in the power play when Musa was going for so many runs? Yeah, very much so. Swept in the gap. Oh, brilliantly done. He hit the gap, and for a moment you thought that'll race away to the fence. But Nasser Nawaz with an expert dive and made sure that he restricted the ball from going to the fence. Fielding hasn't been their strong suit up till now. Sharjeel was also dropped earlier in the piece. And fielding plays a huge part, you know. Now he's on 46. Shadab visibly annoyed. He's really annoyed. He's had a go at the umpire saying that it hits the pad of the batsman. He's not happy at all with the decision of that wide. Have a closer look. I'm not too sure if that kissed the pad or not. And Shadab is adamant. He is completely adamant. Maybe he's just angry at himself for bowling, you know, that wide. Excellent, excellent, shabash. Sometimes that happens, you know, heat of the moment, but he could be in trouble for this.
Yeah, might be angry at himself, but he gestured to the umpire. And it was quite a severe reaction. We haven't seen this much, but yeah, one of those moments. Anyway, still, Sharjeel is the danger man for Northern. He's played some exciting shots, Sharjeel. And he's played sensibly today, because normally when he's about 25-30, you feel like, you know, in the next few balls he might be out, and that happens very often. So today he's showed some sense, you know, batted better, sort of prolonged his innings, cashed onto that opportunity he was given by Asif Ali. Well bowled, beautiful, beautiful boy. Excellent, excellent, shabash. Beautiful boys. Call for 2, and they'll make it comfortably. Shadab bowled a couple of wides. He's just gone for 8 of the over. It's 86 for 2. Osaka question of the day: who is the first Pakistani player to score a century, take 5 wickets in the same test? Shabash, shabash, shabash. Hits the fielder. So the Osaka question of the day: who's the first Pakistani player to score a century and take 5 wickets in the same test? Answer on www.fb.com/osaka.batteries. Well bowled, beautiful. Saud playing well also, just right now living in the shadows of Sharjeel, but it's a good time because Sharjeel's close to his 49, and it's a good time for Saud to sort of settle in slowly. Misses out. It's a short delivery and is going down leg, but Sharjeel normally hits this over the fence. The northern spinners not turning the ball so much. They're not the sort of spinners who turn the ball too much, but there's some drift for the spinners. The inside edge, and Sharjeel gets to his 50. 36 deliveries for that 50. And he needs to carry on, needs to up the ante now. But he does pack a punch. It's been that innings where he's been able to mix that packing of a punch with some organized batting as well. Yeah, solid innings, good innings. He got an opportunity, cashed on, and that's what good players do. सल्लू भाई अंदर अंदर हो बस 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 अंदर हो उसका अंदर रहो बस ठीक है अंदर रहना 89 for 2.
Pakistan, North America, UK, Europe, but streaming. High definition streaming, if you like. It's PCB YouTube channel and PCB Facebook page. Crisp quality viewing. Projected score once again seems like it's going to be in the region of 175 to 180 if they go at about 10 and over from here, and they've got wickets in hand. So yeah, you know, I mean, Shadab shouldn't be arguing with the umpire. It wouldn't be that nice for him. Well, what Shadab has consistently done in this spell, yes, he's bowled those wides, but he's made sure that he's attacked the leg stump rather than give anything outside off. Even the googly, he's starting it maybe outside leg, so that finishes about mid and leg. Yeah, he hasn't bowled badly. He's certainly got a plan, and he bowls after the power play, so there's always protection for him. But this time it's a classy hit down the track and almost a little flick over mid-wicket. Beautiful shot. That's the ball, and down the wicket. Beautiful 6 runs. Left-handers just love to hit it in this area, their favorite area. Off the pad, and that'll also race away. So Sharjeel now with that leg stump line is making Shadab pay. That was off the pad, but everything counts. Yeah, off the pad, 4 runs. But, you know, there's this commentator's curse that we cast on the batsman, also on the bowler. You say he's bowling well. Goes outside off stump this time, but Sharjeel reaches out, smashes it down the ground. 6 4-leg buys and then another 4. Certain commentator's curse on Shadab, and he's gone for runs, plenty in this over. Flighted delivery and full flow of the bat. Nice shot once again. 1 bounce 4. A sweep shot again, and that'll also race away. So Shadab leaking runs. The dive didn't work at all. 18 off that over. It's 107 for 2. एक 107, 2 खिलाड़ी आउट। और अब मामला कुछ ऐसा हो गया है सिंध के लिए कि वो अपने आप को एक ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन में ले आए हैं कि मर्जी से 170-80 पे जाएं तो कोई इसमें कोई दो राय नहीं होगी। मूसा के पास अपॉर्चुनिटी है। 2 ओवर में 29 रन उनको पड़े थे। अभी भी सामना उनका शर्जील से हो सकता है, लेकिन पावर प्ले नहीं होगा। फिलहाल सऊद शकील स्ट्राइक पर। अक्सर
अंडर लाइट्स हम यही बात करते हैं कि मुश्किल कोई नहीं होती बैटर को, अच्छा बैट पे आ रहा होता है बॉल, और लेंथ और लाइन बहुत मैटर करती है, वेरिएशन मैटर करती है। स्कैन कीजिए QR कोड को और एक्साइटिंग इनामात जीतिए जस्ट फॉर मेन। अच्छा मौका है आपके लिए, मैच भी देखें, कुछ इनामात भी जीतें और हर चीज एंजॉय करें क्रिकेट के साथ जो जुड़ी हुई है। एक बार फिर अपना अटैक मूसा पे हावी होते हुए और कैच करने में कामयाब हो गए। हारिस रऊफ ने एक शानदार कैच लिया, पीछे गिरे और चेक किया कि बाउंड्री को तो टच नहीं किया है, तो मूसा के लिए एक सुकून का सांस और शर्जील को वापस जाना होगा। लेजिटिमेट डिलीवरी है ये, और ये विकेट जो है उसके हकदार असल में हारिस रऊफ है। पिक कर लिया था कैच को और बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे ये कैच लिया। अपना तवाज़ुन खोया जरूर था, लेकिन इस चीज के लिए मोहतात थे कि टच ना करें। और सबसे बड़ी विकेट अभी तक की नॉर्दर्न की जानिब से शर्जील। एक बॉलर नहीं अपने भाई की मदद की है, कैच पकड़कर उनको थोड़ा सा रिलीफ दिया, लेकिन थर्ड अंपायर ने इसका फैसला कर दिया कि आउट है। शर्जील ने एंटरटेन किया, 64 बनाए 43 गेंदों पे और अपनी टीम को ले गए 108 पर। बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली और कप्तान ने भेजा है दानिश अजीज को अपनी जगह। यूजुअली खेलते हैं खुद आकर इस नंबर पर। अच्छा मौका है दानिश के लिए, क्योंकि अभी भी इसके ओवर के बाद 7 ओवर्स बाकी हैं। मूसा मूसा ने चेंज ऑफ पेस किया था, 129 की स्पीड थी, कनेक्ट कर लिया था। एलिवेशन उस तरह नहीं मिल पाई और ना ही डिस्टेंस, लेकिन शानदार फील्डिंग हारिस रऊफ की जानिब से। टीम को जरूरत थी इस विकेट की और उन्होंने कैच करके ये विकेट और ये कामयाबी दिलाई नॉर्दर्न को। बहुत ही उम्दा नॉक। 98 जर्सी शर्जील। दोनों अंदरूने सिंध, बल्कि एक बड़ी सिटी है, एक हैदराबाद से शर्जील, दूसरे लाड़काना से शाहनवाज दानी साथ बैठे हुए हैं। उनके साथ पीछे थोड़ा सा फॉर्म को मिस करते हुए शान मसूद। दो बैट्समैन के बीच एक फास्ट बॉलर, क्या सीख रहे होंगे इनसे दोनों से। ये सीखने को बहुत कुछ है। यहाँ पे दानिश अजीज को प्रमोट किया है ऑर्डर में, तो किसी इंस्ट्रक्शन के साथ ही किया होगा। सऊद शकील एक एंड को पकड़े हुए हैं, तो दानिश अजीज का गालिबन रोल यही होगा कि वो थोड़ा एक्सेलरेटर पे पैर रखें और रन स्कोरिंग जो है वो चलता रहे, जैसे शर्जील ने मेंटेन किया हुआ था। बिल्कुल 8.49 की औसत से रन बन रहे हैं। अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा सिंध को, अगर जो उनका टारगेट माइंड में है 170 के आसपास उसको अचीव करना है, क्योंकि अभी बैटर्स मौजूद है डगआउट में इनके, लेकिन रन रेट नीचे नहीं आना चाहिए। बहुत ही शानदार शॉट, इतना अच्छा दिखना, जितना अच्छा दिख रहा था ये शॉट, उतनी तेजी से ये बाउंड्री पे गया। 113, 3 खिलाड़ी आउट।
शर्जील खान की तस्वीर आपको दिख रही है क्योंकि उन्होंने टॉप स्कोर किया अभी तक इस बैटिंग ऑर्डर में, इस मैच में। लास्ट मैच जो इन दोनों टीमों के बीच हुआ था उसमें सिंध ने 221 रन बनाए थे, पिछले साल की बात है। उस वक्त आजम खान खेलते थे इनकी टीम के लिए, उन्होंने 88 किए थे 43 बॉलों पे और मैच जीत लिया था 25 रन से सिंध ने। और रावलपिंडी ही था, आउट हो गए। एक छोटा सा एंट्री और फिर एग्जिट। दानिश अजीज एक बार फिर बल्ले के साथ बात नहीं कर सके और एक सॉफ्ट डिसमिसल, 1 रन बना के आउट। टारगेट करना चाह रहे थे, बड़ी हिट मारना चाह रहे थे, लेकिन बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाए, एलिवेशन मिली नहीं और एक सॉफ्ट डिसमिसल इनका। शादाब को कुछ तो मिला है सुकून के, पिछले ओवर में 18 रन खाए थे और अब दानिश की विकेट पिक की है। 1 रन बना के वापस सिंध 113, 4 खिलाड़ी आउट। सीमट स्लो वाला कप्तान आ गए, 226 मैच है इनके पास और 89 इनका टॉप मोस्ट स्कोर। स्ट्राइक रोटेशन के माहिर और गेम रीडिंग के भी। स्ट्रेट अवे ऑफ द मार्क, ये आपको बिजी रखेंगे एज अ बैटिंग पार्टनर। आउट हुए दानिश अजीज। बड़ी हिट मारना चाह रहे थे लेकिन कनेक्ट नहीं किया इन्होंने। ऑप्शन बुरी नहीं थी, जाना ही था क्योंकि रन्स चाहिए इनको, टारगेट पोस्ट करना था, लेकिन कुकली नहीं पिक कर पाए थे। दानिश अजीज एक बार फिर इम्पैक्ट नहीं कर सके। रिएट शॉट मिड ऑन पे, शॉट मिड विकेट पे रादर कैच हो गए। इस टूर्नामेंट में अभी तक 17, 5, 0, 1 बनाया है इन्होंने। 17 पे नॉट आउट थे, फिर 5, 0 और 1। सरफराज का मैं जिक्र कर रहा था कि सरफराज ने पिछले मैच में 0 बनाया था। ये इनका फर्स्ट टक था 42 इनिंग्स में और ये T20 इनिंग्स की बात कर रहा हूं मैं। इस टूर्नामेंट में भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, एक प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड भी ले चुके हैं, ख़त्म किया है गेम एज अ बैटर। लीड भी अच्छा कर रहे हैं सिंध को, एक ही मैच हारा है सिंध अभी तक और टेबल टॉपर है पिछले 2-3 दिन से। अभी क्रूशल रोल होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब लगातार विकेटें गिर जाती हैं तो जो रन बनाने की रफ्तार है वो काफ़ी हद तक स्लो हो जाती है। और यहाँ पे सिंध की कोशिश हो कि नॉर्दर्न को जो है वो हावी ना होने दें, इसलिए सरफराज को जो है वो सऊद शकील के साथ एक अच्छी इम्पैक्टफुल इनिंग्स बनानी पड़ेगी। अभी तक हमने नवाज को एक्शन में नहीं देखा। इमाद और कप्तान खुद स्पिन डुओ है। पहला रन तेजी से कहा कि यहाँ पे थोड़ा पुश करेंगे दोनों बैटर्स। ओवर मुकम्मल, शादाब का अच्छा स्पेल, 2 विकेट्स हासिल की, 33 रन दिए, 117, 4 आउट।
पावर प्ले में बॉल मिला नया हारिस रऊफ को। देखें 2 ओवर में 4 रन दिए सिर्फ और एक खिलाड़ी आउट किया और बॉलिंग बहुत अच्छी थी। इस तरह बाहर निकाला इन्होंने स्पेस के साथ बॉल को। सलमान इरशाद आज की एंट्री है 2 ओवर में 18। चांस कॉटन बॉल का इमाद वसीम के गालिबन गेंद सही तरह से हाथ में आया नहीं। ये सिर्फ एक रिफ्लेक्स रिएक्शन ही होता है स्पीड में। सिंध एक और झटका लगने से बाल बाल बचे हैं। बिल्कुल सीधा खेल दिया था, तेज शॉट था, लेकिन ऐसे कैचेस लेने चाहिए और लेने पड़ते भी हैं। थोड़ा सा शायद लेट हो गए। ठीक है शाबाश। लेकिन ये सऊद शकील को थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे पार्टनरशिप की जरूरत है सरफराज के साथ। शॉट खेला, शानदार शॉट, शादाब को बीट किया सर्कल में। स्मार्ट क्रिकेट सऊद शकील की। शानदार शॉट, ये इनसाइड आउट खेला, खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया और ये खब्बे बल्लेबाज का ऑलमोस्ट सिग्नेचर शॉट होता है। एंगल भी मिल गया था और पूरा फायदा उठाया उसका। 4 रन। क्लास है सऊद शकील की बैटिंग में। किस तरह से एंगल किया बैट के ब्लेड को और ऊपर से खेला शादाब के। और फिर उसके बाद सिंगल हासिल करी, स्ट्राइक रोटेट की, मिस फील्डिंग। 1 सेकंड के लिए नजर हटी बॉल पे से और एक्स्ट्रा रन निकल गया। अच्छी रनिंग, दोनों की जानिब से प्रेशर डाल रहे थे और हारिस रऊफ मौजूद थे फील्डिंग पोजीशन पे और इस वक्त ये मौजूद हैं टपाल्टी के साथ। शाम एंजॉय कर रहे हैं। शाबाश शाबाश। बता रहे हैं कि मैंने कहा था ना ट्राई करो, अब पता लगा। आराम से आओ, आराम से आओ। ये बिजी रखेंगे फील्ड में सबको, दोनों बैट्समैन। ये वो मिसफील्ड है। ओवर रन कर गए थे। नॉर्मली एक हाथ से फील्ड करते हैं ताकि दूसरे रन बनाने का मौका ना मिले। बिल्कुल खुश नहीं है शादाब, अच्छे फील्डर हैं लेकिन उनसे भी कभी कभी चूक हो जाती। ठीक है मैडी भाई। चलो पहला तेजी से क्या प्रेशर डाल पाएंगे, दूसरे के लिए भी वापस आ गए हैं और फिर यह होता है प्रेशर से फील्डर चूक जाता है और ये दोनों बैट्समैन आपके साथ यही खेलेंगे। दाद देनी पड़ेगी सऊद और सरफराज की अंडरस्टैंडिंग को और यही समझदार क्रिकेट है। खेलते साथ ही 2 रन की ऑफर की थी, सॉफ्ट खेले थे और नासिर नवाज इस बार जो नाकाम रहे 2 रन रोकने के लिए और एक बार फिर अंदर है नासिर के चेहरे से मायूसी झलक रही है। सिंगल के साथ स्ट्राइक रखेंगे सरफराज। 127, 4 खिलाड़ी आउट। ये है जीएफएस सिंध की अभी तक की परफॉर्मेंस। अर्ली ऑन ये हारिस रऊफ ने बहुत शानदार बॉलिंग की थी, याद दिला दी एक टाइम पे जब बॉडी लाइन बॉलिंग होती थी ऑस्ट्रेलियंस, इंग्लैंड बॉलर्स और स्पेशली वेस्ट इंडीज अच्छी पेस के साथ वेल डायरेक्टेड बाउंसर्स थे और इस टाइम पे बहुत क्रूशियल ये बॉलिंग रही इनकी क्योंकि इससे पहले मूसा ने काफ़ी रन दे दिए थे। तो आज काफ़ी इम्तिहान हुआ खुर्रम मंजूर का।
मानदसीम खैरियत पूछते हुए खुर्रम मंजूर की उस ओवर के बाद 42 बनाए थे पिछली बार जब दोनों टीमें खेली हैं। सरफराज ने मैन ऑफ द मैच थे और इस बार लीडिंग एज, ऊपर से निकली गेंद। बॉलिंग ऑप्शंस अगर आप देखेंगी मरीना यहां पर बाकी बचे तकरीबन 5 ओवर, समझिए 5.5 ओवर। ये वो पिछली बॉल, बैट का फेस क्लोज किया, आउटर एज लगा। इनके पास ऑप्शंस हैं क्या? क्योंकि अब नवाज को अभी तक ट्राई नहीं किया है, क्या उनको मिलेंगे 1-2 ओवर? क्योंकि वरना सलमान के पास 2 हैं, हारिस रऊफ के पास 2 हैं, तो 1 ओवर किसी को कराना होगा, यानी मूसा को लेके आएंगे। लेकिन नवाज को आज बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दी बॉल के साथ। शॉट और आउट। सलमान इरशाद की पहली कामयाबी इस साल के नेशनल T20 में। आसिफ ने कैच कर लिया। एक बार फिर एक्स्ट्रा कवर को टारगेट किया था सऊद शकील ने, लेकिन इस बार सीधा फील्डर के हाथ में खेल बैठे। और आसिफ अली अक्सर ऐसे कैचेस नहीं ड्रॉप करते। अच्छी बॉलिंग थी सलमान इरशाद की, पिचअप किया था, थोड़ा सा रूम दिया था खुद को, लेकिन इस बार नाकाम रहे गैप हासिल करने में। सऊद शकील की इनिंग्स अपने अख्ताम को पहुंची। 28 बनाए 21 गेंदों पर, 128, 5 खिलाड़ी आउट सिंध। अनवर अली बड़े आइडियल टाइम पर आ गए हैं बाहर, जब GFS सिंध को जरूरत है। 180 तक तो जाएं और इसके बाद 4 ओवर बाकी हैं, तो ये अच्छा मौका और प्लेटफॉर्म है। सऊद शकील फ्रंट फुट पे कमिट बहुत कम होते हैं और अक्सर ऐसी शॉट्स मारने में कामयाब होते हैं, लेकिन इस बार नहीं, नी लॉक रही और सीधा फील्डर के हाथ में खेल बैठी। ऐसी कुछ सिचुएशन पहले मैच में थी, बलूचिस्तान और सदर्न पंजाब का जब मैच हुआ। ATF सदर्न पंजाब लगभग 127 पे था और फिर वहां से एक्सेलरेट किया, 174 तक गए। सिंध पे भी ऐसी सिचुएशन अक्सर आती रही है और ये इशू रहा है इनका। 8वें ओवर से लेके 13वें 14वें ओवर तक बीच में विकेटें गिर जाती हैं और ये बासित अली थोड़ी सी परेशानी का इस वक्त इनको सामना होगा। जितना आइडियल स्टार्ट मिल गया था उस पर कैपिटलाइज एक बार फिर नहीं कर पाया सिंध। और ये फिलहाल का स्कोर प्रेडिक्शन है सिंध का। अब ये दोनों बैटर्स ये जहन में आइडिया लगा रहे होंगे कौन सा ऐसा बॉलर है जिनको टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास अभी सलमान इरशाद का एक और ओवर है, इसके बाद हारिस रऊफ के 2 ओवर बाकी हैं। शानदार बॉलिंग की है तो वो तो कराएंगे ही। अब मूसा को 1 ओवर मिल सकता है या फिर नवाज आए 1 आध ओवर करने के लिए। रैम शॉट शानदार, ज्यादा कुछ नहीं करना था, पेस को और ज्यादा हेल्प किया, कीपर के ऊपर से खेल दिया और 4 हासिल कर लिए ओवर के मुकम्मल होने पर। 134, 5 आउट।
So 4 overs to go now, 134 for 5, and I think they've paced themselves nicely. Yes, it would have been nice without those satellite dishes that have suddenly appeared. And yes, they got over number 12 to go past the 17 mark. And that would have been a nice little kick on from there. But I think they've paced themselves reasonably well. They've got a little bit of catching up to do now with wickets going down. Harris Ralph. Quick single, putting pressure on the captain. What happened there? It seems like he's injured himself in some way. We'll come back to that after this boundary of the last ball. Very clever shot by Anwar Ali, using the pace of the bowler and choosing an area where there's no fielder. It's an interesting situation too. I mean, normally teams like to have a couple of guys at the crease who have just arrived, and you got Anwar Ali and Sarfaraz. Now they're two guys that are experienced. That's a great shot. That is a wonderful stroke. Lovely push for 4. Gee, that's nice. Second ball of the over. Back-to-back boundaries for Anwar Ali. One of the last over, and this over, the first delivery he faces. Just look at that timing and a late punch to make sure that Shadab cannot reach that. And if Shadab cannot reach that, it's not many people can. So you've got him at one end who likes to have a go. You've got Sarfaraz at the other end who likes to pose little dinky shots and gets boundaries and likes to sweep the spin. If they're around the place, I don't know if we're going to see too much more of that. And it seems like Shadab has injured himself. He's walking off. Not good signs for Northern. Quick single, good running. Both of them out of the blocks quickly, supporting each other. And look at that. Not sure what happened there. Okay, this was the dive. But before this ball, he got injured. But on this dive also, he had a bruise. Dot ball. Oh, the coach is looking a little bit concerned. Asad Ali, there he is. That's it. Forearm jolt. Nice to watch him play, actually. Doing a job coaching. Of course, you had experience with him as coach. Yeah, he's got one of the most intelligent cricketing minds. Reads the game really well. Just want to just give an update on something extras, right? Now, extras have climbed here. We've got 13 extras. Now, the extra total with the extras we've got now. This is actually the work that Shadab Khan's been doing in the field. And if you add the extra runs scored by the wide and the extra ball, whatever, they've been penalised the tune of 21 runs, okay? So just bear that in mind at this stage. So it's 13 extras overall, but the extra balls because of the 5 wides, and there's no balls, there's no free hits. That's 21 runs they've been penalised with the extra ball. Quick single again, so that's good work. That's okay. 8 runs off that over. 17 gone now, 142 for 5. There's the 13 extras plus what I said, so that number of 21. Now,
The game before, by the way, as you look at the bowling figures, the game before, 36 runs were scored by the extras, plus the free hits and the runs scored off that, plus the extra ball that had to be bowled because of wides. So that's a big swing, 36 runs. And that's why the performance of KP yesterday, where they only gave one extra, and that too of a leg by, was so exceptional. So all the teams can learn from the performance of KP, because these extras can cost them matches. Start of the 18th over. Got to go some, I think. Sarfraz was talking about 170. That's the figure that he wanted at the toss. And for that, he needs to go 12 and over. They need to go 12 and over. 14 and over would be 174. That is all reachable because they still have got both Sarfaraz and Anwar Ali at the crease. All it needs is a couple of lusty blows per over, really, to get there. Oh, that's off the glove. That's a no ball. That's going to be a free hit. That's a nasty rap on the glove. Hope he's okay. Gloves these days are very good. Yep, there's the call. Umpire checking just to make sure that Sarfaraz is okay as well. And Salman Irshad this time with a no ball. Just one run off that, but a free hit. Apology did come, by the way. That came also from Shalab Khan. And as Shadab has not used Mohammad Nawaz today, the 3 overs left now are from Salman Irshad, Haris Rauf, and then he will have to go back to Musa. Otherwise, Nawaz is the only option. Free hit, hammered away, just the one though. It's a good result, if you like, as good as you can get, I guess, with the free hit, just one. Almost as good as you can get, I guess. Yes, almost. Third man point was in for Anwar Ali. A cut, uppercut might have been a better option on that one for free hit. So 2 balls only into the over, and 4 on the board, and a sore hand. Strong drive to mid-off, just 1. And from here, they need 12 and over again for that 176 mark. 10 and over 171. That's the minimum they would like to get. Anwar Ali has had a good run with a bat in this tournament, so he's on strike now with 3 balls to go. Hard down the ground. Is it far enough? It's not far enough. That's pulled straight into the hands of Nawaz at long off. So that's an important wicket. It really is. He can be seriously dangerous. Salman Irshad with a wicket again in a very good catch. Salman Irshad, beg your pardon. Just look at that. It was there to be hit, but Anwar Ali did lose a bit of balance, and Mohammad Nawaz was perfect with the catching. Anwar Ali gone for 13, big wicket. Sindh 147 for 6. Two balls left. That's the way he likes to play. A little dinky shot. Is he going to come back for 2? Yes, he is. Nice weight, that shot. Clever batting. Sarfaraz, he's a busy cricketer.
And that's the wicket. Just look at that. He was deep in the crease, wanted to get that elevation, but it was not enough. Nawaz with a good catch, good running catch, and Salman Irshad with another wicket. That's his second. They know how valuable Anwar Ali is back in the hut. We have been talking about that extra batter in Sindh's lineup. We'll come back to that. Last ball over number 18. Short ball. Hammered away. 4 runs. Really good shot. That is terrific stuff from Sarfraz. So 11 runs now off that over. 18 gone. 150. 3 for 6. So a couple of overs to go now. 12 legitimate deliveries. They don't want to bowl any extras at this stage because boundaries are available. Captain's been in really good nick in this event of late. This is the last ball of the last over. And low position there, and he used the short pitch delivery really well. Pulled it into the gap. Just look at that. So quick on his feet. Nope. Dot ball to start with. Haris Rauf will want a string of those. And in order to really capitalize on this platform, both these batters will have to score. Sarfaraz will need a partner in Roman Reis. He did play a couple of good shots yesterday, but they need to bat these 12 balls. Haris Rauf's economy rate is 3.5, just above. Back of the bowler. He's had an exceptional night. The way he started today was just quite extraordinary. So he's 2 balls into his final over and he's just conceded 12 runs. It was unbelievable. Some really good bowling, both with the new ball and in at death. And Roman Reis will have to find a way either to get off strike or to hit a boundary. Got off strike. It's got the captain back on. Haris Rauf is going at 7.5 only throughout the entire tournament, so that's an indication of his ability, and he's bowling at good pace. That last one, 146 k's per hour. Also picked up 6 wickets. That's the top of the pops as far as the Northerns bowlers are concerned. Looking leg side. That's where he likes to go. Right, backing away, gives himself room. It's a lovely shot. There's a bit of a knock on. Come back for the second. And it's to Shadab that every ball is going. And this time he was not able to pick it cleanly, and that's why Sarfaraz stole another run, extra run. It was a bit of a fumble. Recovered well there, but in the meantime 2 runs were taken. Okay, they need a boundary now. They want to get to that 170 mark. They need a boundary of ideally both these last balls, but certainly one. Hard down the ground, hit it too well. It's just going to be the single. Reis is going to be on strike for the last ball. It's exactly what Haris Rauf was looking for. And because Danish Aziz is failing time and time again, Sindh is looking for someone in their low order to do the hitting, and they are not finding much there. It's only the top order has been playing exceptionally that they are able to win matches. I wonder if this is a match-winning performance from Haris Rauf. This is sensational stuff. Great speeds.
And that's gone over the top. That's a great shot. My goodness, that is magnificent work. That's gone for 6. Haris Rauf's figures are still absolutely brilliant. However, that over has now gone for 10. 163 for 6. Right, there's confirmation of the work that Haris Rauf has done. 1 over remaining. Musa Khan is entrusted with it. Sarfaraz is on strike. He wanted 170. He's got 7 runs to get there. He'll want more than that, I reckon, in this last over. Might look for 2. Touch and turn, support by Race. That's good running from Race. Really is good running. Oh, oh. And that backup by Mohammad Musa. He's a strong lad. Just walking back again. Very good running by Roman Race. That's teamwork. And look at that. We were talking about power hitting, and Roman Race said, "Don't forget me." I love that power base. Set up like a baseballer, actually, and he smacked it over the top. He didn't like it. He was doing well with the Yorkers. Not sure why he changed the length. Hand seems okay. Nice sound off the bat, and that's gone for 4. That's what they were looking for. That's a really good shot from Sarfaraz. 169 now. And Shadab now stuck with Mohammad Musa because Nawaz was not used in this match. So now Mohammad Musa has to deliver. Sarfaraz using the depth of the crease. And there was a jump that could have been timed better after looking at the replay. Wonder how concerned he is with this total now. Again, it's a good shot, but it's a shot catch. That's nicely taken. That is a very good catch. That went pretty quickly. And after there was some problem there, some discussion. I think Nawaz was changed, Shadab changed the field there. And Nawaz came back, and a very good catch. It was not an easy take, and Sarfaraz furious with himself and with someone else also. He's not happy, that's for sure. He goes for 26, 169 for 7. Three balls to go in this innings. Dot ball. Musa Khan's picked up his 2nd wicket. That's the wicket, the 2nd wicket of Sarfaraz Ahmed. A good catch by Mohammad Nawaz. Musa banging it in. Important catch. It can save 10 runs from here. Yeah, I think that came a little bit quicker than what he anticipated, actually. And it was a good catch. It's not at all happy. He's chatting to anyone who's prepared to listen, I think. Right, 2 balls left in the innings. Squeeze that away square. There is a sweeper. It should just be the one. It is. That takes up to 170.
And that's the 170 target Sarfaraz wanted. Now Roman Reis is back on strike. I think what Sarfaraz is not happy is about the crossing. He thought Roman Reis should have taken the strike. Someone tell me they've got 170, please. It's okay, skipper. It's okay. It's okay. They'll get runs off that last ball. You wanted 170, you've got 170. Captain, you've got 170. Last ball. Hard. Down the ground. High. That's gone for 6. What a way to finish that innings. That even might put a smile on Sarfaraz's face, although I can't promise it. And that's why he wanted Roman Reis back on strike, I think, because this is what Roman Reis can do. Just look at that shot. So much power behind it. And he played some very good knock here. 13 of 5. And that power hitting we were talking about, Roman Reis provided for that. That's a really fine shot. Last ball of the innings. Now that's going to get these boys a little bit concerned, I'd imagine. What's this about now? Captain's decided to have a bit of a powwow in the middle. Just a bit of a chat. Obviously, they can't do that in the change room, maybe. I don't know. I would have thought that maybe the best way to do it about it is get in the change room, have a bit of a chat. But anyway, he wants to get them out there and do it. But anyway, 176 for 7 it is. I think that's a really good total. I don't think this is an out-and-out batsman's paradise, that's for sure. I think the spinners can play a role here, and I think the intelligent seamers with their variations and change of pace can actually do a pretty good job. If they pick up wickets early, that's going to be key. But GFS Sindh in the end have got a pretty good score. Shajil 64 off 43 balls, Saad 28 off 21, Sarfaraz 26 off 18, and Reis, that was really good, 13 off 5, including that wonderful 6. And big partnerships with Sharjeel at the top. Khurram Manzoor and Sharjeel, 52 runs partnership. Then a good partnership between Saud Shakil and Sharjeel Khan, 49 runs. Then small partnerships with Sarfaraz, 15, 19 and 22. Okay, let's go downstairs now to Buzzard Khan. Sharjeel, very well played. आज बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की. पिच के बारे में बताएं, बॉल ठीक आ रहा था बैट पे? थोड़ा सा लो रह रहा है बॉल विकेट के ऊपर, जो थोड़ा सा आप विकेट टू विकेट बॉल कर रहे हैं, बीच वाला बॉल थोड़ा सा स्किड भी कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा लो रह रहा है बॉल. जब पावर प्ले में जब आप बैटिंग कर रहे थे, एक तरफ से हारिस रऊफ ने बड़ा अच्छा ओवर किया, लेकिन उस टाइम पे क्या डिस्कशन हो रही थी आपके बीच? डिस्कशन यही था कि शुरू में बॉल का शेप बन रहा था, कोशिश थी कि एक विकेट हमने लूज़ कर ली थी, तो बस खुर्रम भाई और मेरी यही बात हो रही थी कि दूसरी विकेट नहीं देनी हमने, और बॉल का शेप हो रहा था, स्विंग हो रहा था, हमने बोला 2-3 ओवर स्विंग होगा, उसके बाद फिर हम लोगों ने चार्ज किया. शादाब से बड़ा मुकाबला होता है, हमने आज स्ट्राइक रेट देखी तो आप शादाब को तो बहुत अच्छा खेलते हैं. बस लेग स्पिनर है, फिर मैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन हूँ तो कोशिश करता हूँ कि उसको स्ट्राइक करूँ. लेफ्ट आर्म स्पिनर हो या राइट आर्म लेग स्पिनर हो, तो कोशिश होती है कि जितने रन उनके ऊपर बना सकूँ. 170-175 सरफराज ने बोला था टॉस पे कि ये हमारा एम है, वो तो पूरा हुआ. ये डिफेंडेबल है? हाँ, देखें, डिसिप्लिन बॉलिंग करनी पड़ेगी इसको डिफेंड करने के लिए, और रूम कम देना पड़ेगा. अगर अच्छी बॉलिंग करेंगे, अच्छी फील्डिंग करेंगे तो इंशाल्लाह हम ये डिफेंड करेंगे. चलें, थैंक यू वेरी मच. वेरी वेल प्लेड. थैंक यू. Looking pretty happy the way things are going. That's a situation with Northern, they're bowling. Look at the work that Haris Ralph did. That was brilliant. 4 overs, 12 dot balls, 1 for 22, 2 for 36 for a shot at the top with that indifferent action, but it's always nice to see. I like that sort of stuff. A couple of wickets to Musa Khan, and Shadab did a very good job as well with his leggies. 9 dot balls, 4 overs, 2 for 33. Righto, we got a game on. This is 1 versus 2. Don't forget that. Northern need 177 runs on a track which you heard Shadil saying it just keeping a little bit low from time to time. They've got to go at 8.85 runs per over.
जीएफएस सिंध जिनको बैटिंग की दावत दी गई 176 बनाने में कामयाब हुए। 20 ओवर में 64 शर्जील के बहुत ही शानदार इनिंग्स और नीचे सरफराज 26, रोमन रईस 13 5 गेंदों पर। देखते हैं जीएफएस सिंध ने किस तरह बैटिंग की और शान मसूद आए ओपन करने के लिए शर्जील के साथ और पहली कामयाबी हासिल हो गई थी जल्दी, लेकिन एक एंड से शर्जील जो है जोरदार शॉट्स लगा रहे थे। नया बॉल करा आज हारिस रऊफ ने और शान मसूद की विकेट हासिल की। ये बहुत ही शानदार ओवर था उनका, लेकिन एक चौका जरूर पड़ा था। आज सलमान इरशाद भी टीम में इंक्लूड हुए, 2 विकेट्स उन्होंने हासिल की। मूसा के अगेंस्ट बिल्कुल भी जो है छोड़ा नहीं शर्जील ने और काफ़ी बाउंड्रीज हासिल की और इनिशियली उनको प्रेशर में रखा। ये वो ओवर था जिसमें 4 चौके लगाए थे शर्जील खान ने और शानदार नॉक उन्होंने खेला। ये एक अपॉर्चुनिटी जरूर आई थी जहां आसिफ अली ने ड्रॉप कर दिया था उसी ओवर में और उस पर भी बाउंड्री हासिल हो गई थी। बड़े शॉट्स लगाए और मूसा को अंडर प्रेशर रखा शर्जील खान ने। अपनी इनिंग्स को कंटिन्यू करते रहे, टाइमिंग के साथ भी शॉट्स खेले। दूसरी तरफ खुर्रम मंजूर ने भी एक आध शॉट लगाया, लेकिन हारिस रऊफ के कुछ बाउंसर्स ने उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है फॉक्स कर दिया और पहले ओवर में शादाब ने कामयाबी हासिल की। उसके बाद पार्टनरशिप को बिल्ड करना शुरू किया सऊद शकील ने शर्जील के साथ। शर्जील अपने मखसूस अंदाज में खेलते रहे, जहां जहां अपॉर्चुनिटीज मिली उन्होंने शादाब को भी और इमाद वसीम को भी बड़े शॉट्स लगाए और ये एक शॉट बॉडी से थोड़ा दूर खेला था, लेकिन फिर भी कामयाबी हासिल हो गई उसको इस शॉट में। इसके अलावा शर्जील का जो एक फेवरेट एरिया है उधर ही इनका कैच भी हुआ और बड़ा उम्दा कैच लिया हारिस रऊफ ने। शादाब कंटिन्यू करते रहे और विकेट्स आती रहीं नॉर्दर्न के पास। दानिश अजीज एक बार फिर फेल हुए, 1 रन बना के आउट हुए। उसके बाद सरफराज और सऊद शकील ने एक पार्टनरशिप बिल्ड की और उनका भी कैच हो गया सऊद शकील का, जहां पे आसिफ अली बर्थडे बॉय ने सलमान इरशाद को पहली विकेट दिलाई। रात ही अनवर अली ने रैम्प शॉट खेला और 4 रन हासिल किए। कुछ अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं आजकल अनवर अली, फिनिशिंग करना चाहते हैं, लेकिन हर रोज कहते हैं कि आपका दिन जरूरी नहीं हो और आज जल्दी आउट हो गए। सरफराज ने कोशिश की कि टीम को बड़ा स्कोर मिले और उन्होंने रोमान रईस के साथ मिलके कुछ शॉट्स लगाए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। एंड में यहां चूक गए और नवाज ने उनका कैच लिया और उनको भी डिसमिस कर दिया, लेकिन इनिंग्स को बड़े खूबसूरत अंदाज में आखिरी बॉल पे छक्का लगाकर रोमान रईस ने खत्म किया और टीम का स्कोर ले गए 176 और एक फाइटिंग टोटल और फाइटिंग चांस दिया जीएफएस सिंध को। जी हाँ, अच्छा टारगेट है और ऐसा हो सकता है कि ये टारगेट चेज हो जाए। 170 और रन्स ढूंढ रहे थे सरफराज, टॉस पे उन्होंने यही कहा था और ऐसा टारगेट है सिकंदर जो आप चेज भी कर सकते हैं और दूसरी टीम आपको आउट भी कर सकती है, तो दोनों टीम्स के लिए एक चांस बनता है एक 175 के स्कोर के हिसाब से। नासिर नवाज और सरमद हमीद ओपन करेंगे नॉर्दर्न के लिए, जबकि अनवर अली को नया गेंद दिया गया है। ये एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी अनवर अली को दी है इस बार सरफराज ने कि पावर प्ले में नया बॉल कराएं, जिसपे किसी हद तक आरामद साबित हुआ है। अब जो चीज देखने वाली है सिंध की वो ये है कि अपनी लेंथ्स को मैनेज करें, ज्यादा फुलर लेंथ नतीजा होता है बड़े बड़े शॉट्स। 177 चाहिए। अनवर अली, नासिर नवाज ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और बड़े पॉजिटिव नजर आए हैं। इन्होंने अटैक किया है फ्रॉम द वर्ड गो, इनको जो अपॉर्चुनिटी मिली इन्होंने दोनों हाथों से उसको दबोचा और अपना इंपैक्ट दिखाना चाहते हैं इस नेशनल T20 में। लेंथ्स की है। सरफराज को आप देखते रहिएगा इस इनिंग्स में वो क्या बता रहे हैं और कहां उनके क्या रिएक्शंस होते हैं। बड़ा इन्वॉल्व रखते हैं अपने आप को ये गेम में। प्ले में बॉलिंग करना भी एक आर्ट है। आपको ये पता होता है कि सिर्फ 2 फील्डर्स 30 गज के बाहर हैं। आपने आइडेंटिफाई करना है आप उनको ले कहाँ रहे हैं और इस वक्त जो सिचुएशन है उस हिसाब से अब डीप स्क्वायर लेग पे एक प्लेयर ले लिया गया जो आपके राइट पे है स्क्रीन के, जो जा रहा है और फाइन लेग को अंदर ले आए हैं। दूसरा जो बाहर है फील्डर वो है 3rd मैन पे, बिल्कुल ऑलमोस्ट अंपायर के पीछे।
अटैक किया बाहर निकल के। यह है नासिर नवाज का स्टाइल। आपको सेटल नहीं होने देंगे एज अ बॉलर। आपकी जो लेंथ थी उसको अपने हिसाब से किया, बाहर निकल के और गेंद को जल्दी मीट करके शॉट लगाया। जी हाँ, बहुत ही अच्छी शॉट थी, कदमों का इस्तेमाल किया और बेहतरीन आवाज आई एक बैट से, और उसी तरह का रिजल्ट भी इनको मिला जिस तरह वो चाहते थे। बेहतरीन 4 रन हासिल किए और बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा इस शॉट से उनको। पावर प्ले जैसे आप कह रहे थे कि बॉलर के लिए आसान नहीं होता, उसको देखना पड़ता है किस लेंथ पे बॉल करे, क्या लाइन होनी चाहिए। शॉट, शानदार शॉट। इस पेस पर, इस लेंथ पे नुकसान उठाना पड़ेगा। 130 के आसपास अगर आपकी पेस है तो इस लेंथ में पावर प्ले में तो खैर आप दूर की बात है, किसी भी ओवर में हो आपको शॉट जो है वो बड़ा वाला ही लगेगा। जी हाँ, बहुत ज्यादा शॉर्ट बॉल थी और उसको जल्दी पढ़ लिया बैट्समैन ने और पूरा फायदा उठाया और तमाशाइयों के बीच में जाके बॉल गिरी मिड विकेट बाउंड्री के करीब, उससे बाहर बल्कि। बेहतरीन शॉट। और अनवर अली को अपनी लेंथ को ज़रा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा या तो आगे गेंद करें, स्लॉट से भी बचाएं कि स्लॉट में गेंद ना करें और शॉट भी ना करें। एक वो जो लेंथ होती है ख़ास जिसमें ट्रबल हो सकता है, वहाँ करें। और रन आउट का चांस, डायरेक्ट हिट होनी चाहिए, मिस कर दिया ये दानिश अजीज से वहां पर, और सिंगल भी हासिल हो गया ओवर थ्रो में। फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का चांस लेते, होल्ड करते बॉल तो चांस था, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर बहुत आगे निकल गए थे। सरफराज की नाराजगी बजा है। जी हाँ, बॉल तो इस दफा अच्छी थी, रन आउट भी हो सकता था, लेकिन फील्डिंग का मेयार कुछ बहुत ही करीब से इन्होंने मिस किया। यहाँ से बॉल इनको 100% विकेटों पे मारनी चाहिए थी। सरमद हमीद छोड़ चुके थे उम्मीद, उन्होंने कोशिश भी नहीं की वापस आने की। तो पहले ही ओवर में बहुत कुछ हुआ है, एक चौका, एक छक्का, एक रन आउट अपॉर्चुनिटी, 12 बगैर किसी नुकसान के नॉर्दर्न। साढ़े 400 मैच तो सिर्फ इमाद वसीम और आसिफ अली के मिला के ही हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। नवाज के पास 165, 162 शादाब के, सबसे कम सरमद हमीद है। दूसरा मैच स्ट्राइक रेट्स आप देखें, सबसे बेस्ट जो है वो हारिस रऊफ का है। एज और 4, नए बॉलर का आते ही वेलकम, थिक आउटसाइड एज लगा। ये जीएफएस सिंध को कंट्रोल करना होगा। बिल्कुल, पिछले मैच में भी इनके बहुत रन पड़े थे और इस दफा ये थर्ड मैन की तरफ इनको एक चौका हासिल हुआ। खेलना ये यहाँ नहीं चाहते थे, कवर में खेलना चाहते थे, लेकिन कॉन्फिडेंस की गेम है सारी सिकंदर। जब आपको पिछले मैच में इतने रन पड़ चुके हों और तो फिर जाहिर है आपको अच्छा एक स्टार्ट मिले तो फिर आप रिकवर कर सकते हैं उसमें अगले मैच में। एक और 4, रॉन्ग लाइन, लेग स्टंप की तरफ टारगेट किया और इसका नुकसान उठाया हसनैन ने। रेस करते हुए 20 पे पहुंच गया नॉर्दर्न। सिकंदर, कल हम एक बात कर रहे थे कि जब बॉलर को इतने रन पड़ रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा गेम को स्लो भी कर सकता है, थोड़ा सा अपने कप्तान से बात कर सकता है, थोड़ा सा तहम्मुल से इधर उधर फील्ड प्लेसिंग कुछ कर सकता है डिफरेंट, थोड़ा सा सांस लेके बॉल कर सकता है। जब जल्दी जल्दी बॉलिंग कर रहे होते हैं इस तरह तो फिर मार और ज़्यादा लगती है इनको। ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी प्लान के तहत आए अपने ओवर में। आपने क्या करना है, क्या कराना चाहते हैं, फील्ड पोजीशन आपने क्या रखी हुई है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, किस तरह की फील्ड प्लेसिंग है,
ऑफ साइड पे यूजुअली ज़्यादा फील्डर्स प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं पावर प्ले में। आप टॉप ऑफ ऑफ स्टंप को टारगेट करते हैं, ज़्यादा विड्थ नहीं देना चाहते टॉप ऑर्डर बैटर्स को, क्योंकि वो तो अपना बल्ला घुमाएंगे। उन्होंने सिर्फ 30 यार्ड सर्कल क्रॉस करना है क्योंकि सिर्फ 2 फील्डर बाहर हैं। ये काफ़ी चीज़ें आप जहन में रखते हो, फिर अपने स्ट्रेंथ को बैक करते हैं। आप गेंद बाहर निकालते हैं उस पेस के साथ, आपकी पेस ज़्यादा तेज़ है हारिस रऊफ की तरह, तो आप बाउंसर भी करा सकते हैं। लेकिन फिर बाउंसर भी वो हो जो हारिस रऊफ वाला था खुर्रम मंजूर के अगेंस्ट, जिसका कोई मकसद हो, सिर्फ शॉर्ट बॉल गुजारना नहीं। आपने अगर बैट्समैन को क्रीज के अंदर धकेलना है तो फिर आपको ऐसा कराना पड़ेगा बाउंसर जो कम से कम उसके चिन की तरफ आए, उसको परेशान करे। हाँ, चिन म्यूजिक बिल्कुल। देखें, हाँ, ये जो एरिया है ये बाउंसर का बड़ा लिमिटेड होता है। आपके कंधे से लेके आपके हेलमेट का जो बैच होता है उस पर आपको एम करना होता है और एक परफेक्शन चाहिए होती है इसके लिए। लेकिन अच्छा बाउंसर जरूर काम करता है। टॉप एज चांस है, ये शॉट फाइन लेग के पास और कामयाब हो गए। रोमन रईस ने कैच किया और कामयाबी मिल गई हसनैन को और सरमद हमीद को वापस जाना होगा। अच्छा बाउंसर इस दफा, शॉर्ट बॉल काफी अच्छी कारामद साबित हुई। और जिस एरिया की हम बात कर रहे थे, चेस्ट के ऊपर कंधे के तकरीबन पास थी और अच्छा कैच लिया रोमान रईस ने। और ये अच्छी थिंकिंग, इसी तरह की थिंकिंग जरूरत होती है विकेट हासिल करने के लिए। सरमद गए वापस 9 बनाकर और नॉर्दर्न हो गए 20 पे 1। हैदर अली, जिनका जो फॉर्म है इस वक्त, नॉर्दर्न 60% इनकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है बैट के साथ। 2 चौके लगा दिए थे सरमद हमीद ने, ऑलरेडी तीसरे की कोशिश में गए, पोजीशन में सही तरह नहीं आ सके, ऑकवर्ड हो गया, गेंद बड़ा हो गया और उस जगह से इनको वो स्ट्रेंथ नहीं मिली बॉटम हैंड की जो लगाना चाहते थे। हवा में खेलनी है सारी शॉट। 2 ओवर के बाद 20, एक खिलाड़ी आउट। रोहिल नजीर, नवाज हैं, लेकिन हमने शादाब को पैड अप हुए देखा था अभी। आसिफ अली भी हैं, इमाद भी हैं, बहुत बैटिंग है। शादाब फ्लोट करते हैं। शॉट, क्या शॉट है ये। नासिर नवाज जितने स्ट्रोक प्ले करते हैं उसको डेफिनेटली आप इंजॉय कर रहे होंगे अपने टीवी सेट्स के सामने। इतनी साफ सुथरी हिटिंग और इतनी सेफ। जी हाँ, बहुत जो है ये बिल्कुल मिडल ऑफ द बैट और बड़ा अच्छा फुटवर्क और बहुत ही ज़बरदस्त शॉट गैप में और बिल्कुल अनक्लटर्ड इनका दिमाग है, साफ सुथरा रोल है इनके दिमाग में कि इन्होंने क्या करना है, क्या एरियाज हैं इनके। तो इसलिए इनकी गेम भी बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है क्योंकि रोल क्लियर होगा आपके अपने दिमाग में, आपको पता है आपने क्या करना है, आपके एरियाज कौन से हैं, तो आप यकीनन कामयाब होंगे। ये भी एक ट्रिक होती है, बैट्समैन 145 की बॉल फेस करके अब अचानक 130-27 को फेस करे, आप अपनी बैट स्पीड को मैनेज करते हैं।
ये कहना कि बॉलर की स्पीड हल्की है और मारना आसान है, ऐसा होता नहीं। ये वो विकेट, सरमद हमीद ऑफ स्टंप के बाहर था, उसको ड्रैग करके फाइन लेग पे बॉल गया, टॉप एज लग के। जी हाँ, इसको ये इनके पास कुछ चारा नहीं था, ये जल्दी आई बॉल और समझ नहीं आई कि क्या करें। कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं जैसे बाबर आजम है, एफर्टलेस लगता है शॉट, कोई पावर नहीं दिख रही होती बॉटम हैंड की इतनी जोरदार जो आप देखें बैट स्विंग। और कुछ ऐसे बैटर्स होते हैं काफी जोर से हिट करते हैं, और ये नासिर उसका एक एग्जाम्पल है। QR कोड को स्कैन कीजिए और बेशुमार इनामात जीतने का मौका पाइए जस्ट फॉर मेन, लेकिन इसमें खवातीन भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। हैदर अली का फॉर्म बड़ा जबरदस्त चल रहा है नेशनल T20 में, और इनकी ये पिछले मैच की परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं। ओवरऑल इनका बड़ा उम्दा इस वक्त जो है ना चल रहा है फॉर्म, जिसमें इन्होंने किसी को बख्शा नहीं है, चाहे स्पिन हो चाहे पेस अटैक हो, और सिर्फ अपने लिए नहीं, ऐसे क्रूशल मोमेंट्स पे टीम के लिए स्कोर किया है। पिछले मैच में 200 चेज करवाने के लिए इन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया सेंट्रल पंजाब के अगेंस्ट। उनकी एवरेज 20 अगेंस्ट पेस, 40 अगेंस्ट स्पिन, स्ट्राइक रेट 139 का। बहुत जबरदस्त फॉर्म में है हैदर, और हर तरफ विकेट के इन्होंने कल स्ट्रोक्स खेले, एंटरटेन किया सबको, और मजा आया एक इनिंग्स देखने का। 100 डिजर्व करते थे ये, बिल्कुल बॉलें इनके पास नहीं थी, मैच खत्म हो गया, इन्होंने जिता दिया, वरना इनकी जो इनिंग्स थी एक तो मैच विनिंग थी और डेफिनेटली 100 भी डिजर्व करती थी। इस वक्त इस टूर्नामेंट में 98 की एवरेज है इनकी, 2 50s लगा चुके हैं, 2 मैच जितवा चुके हैं टीम को। ये जो मैंने बात की थी कि बहुत जोर से मारते हैं बॉल को, पूरा बैट इनका फ्लो दिखता है। एक प्लेयर होते हैं जो कि टाइम करते हैं बॉल को जैसे बाबर, और एक प्लेयर होते हैं जो हार्ड हिटर होते हैं और पावर का इस्तेमाल करते हैं। जो टाइम करते हैं, जो टच प्लेयर्स होते हैं, डेफ टचेस होते हैं जिनके पास, वो शानदार होते हैं। अट्ठाईस पर 1। रुनमान रईस लैंडमार्क पे पहुंचने वाले, 99 मैचेस हैं T20 करियर में। इनका इकोनॉमी भी बहुत अच्छा है, 7.3, और इनका जो रिटर्न हुआ है हम देख रहे हैं T20 में, बहुत ही उम्दा। ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलिंग कोच हुए, और उसके बाद अब देखना ये होगा कि आने वाले साल में क्या एक्टिव होते हैं इस प्लेयर के नहीं। हाँ, वापस आ गए, अच्छी फॉर्म भी दिखा रहे हैं, विकेटें भी ले रहे हैं, तो टपाल टी लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैच भी एंजॉय कर रहे हैं। रुमान रईस की बात हम कर रहे थे, वापस आए, उन्होंने फॉर्म दिखाई, और यकीनन उनको PSL में वापसी का इम्कान तो है, और उम्मीद भी करते हैं, होनी भी चाहिए। अच्छे बॉलर हैं, वेरिएशन बड़ी है उनके पास, और आज तो कैमियो भी इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त खेला, एक एंड में एक छक्का भी लगाया। फिर शानदार शॉट, इतनी जल्दी पोजीशन में आते हैं नासिर, बिल्कुल मौका नहीं दिया। हालांकि स्पीड 146 थी इस गेंद की, लेकिन लेंथ से चूक गए, मौका दे दिया कि इसको पुल कर दें।
बहुत ही शानदार आंख रखते हैं फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट नासिर। जी हाँ, बहुत अच्छी शॉट, फॉलो थ्रू भी जबरदस्त, होल्ड किया उन्होंने अपने पोज को भी, खुद भी इंजॉय की शॉट। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि शॉट खेली अच्छी, उसको खुद भी इंजॉय किया। बॉलर ने यकीनन नहीं इंजॉय किया, लेंथ बहुत शॉर्ट थी, इसको करेक्ट करना पड़ेगा जल्दी इनको। चांस लिया नासिर ने इस शॉट को खेलने में, लकीर है, ये अक्सर ऐसा होता है, आप ड्रैग करके स्टंप में ही मार देते हैं बॉल। आप देखिए इतनी जल्दी बॉल के लाइन के बाहर गए, इसको फाइन लेग पे खेलना चाहते थे। जी हाँ, जगह बनाई, इम्प्रोवाइज किया और अच्छे 4 रन हासिल किए। ये नहीं कि दिखाया कि वो तेज शॉट्स भी खेल सकते हैं, इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं, डेफ्ट टचेस भी कर सकते हैं, सब कुछ है इनके पास, टाइमिंग भी है। ओहो, ये शॉट है ऐसे बैट्समैन का जो सुप्रीम फॉर्म में है। मौका मिला और उठा के बॉल फेंक दी मिड विकेट के बाहर। अंडर प्रेशर एक बार फिर हसनैन। ये वो शॉर्ट बॉल जिसपे 6 हासिल किए हैदर अली ने, अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं आज भी। ये सोच रहे काश मैं बॉलिंग कर सकता। ये अपॉर्चुनिटी थी, रिएक्शन से आप हैदर के देख सकते हैं। बॉल ऐसी लेंथ पे था कि इसको ये एक्स्ट्रा कवर पे उसके थ्रू 4 हासिल करते। बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। वैसे जब रन नहीं भी मिल रहे तो हैदर अली का बल्ला जिस तरह जा रहा है, फुटवर्क जिस तरह हो रहा है, अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, रन भी बनाए हुए हैं। थर्ड मैन को अंदर लिया जा रहा है इस वक्त और पुश बैक कर दिया है लॉन्ग ऑन पे एक फील्डर। खासे वाइड खड़े हुए हैं लॉन्ग ऑन के फील्डर। शॉट खेला पॉइंट की तरफ और गैप नहीं हासिल कर पाए। 4 ओवर्स के बाद 39, एक खिलाड़ी आउट नॉर्दर्न। So going at, let's round it up to 10. It's 9.75 actually to be precise, but things are going nicely at the moment, that's for sure. The same stage, Sindh were 40 for 1. Tahani now, the youngster, Mr. Energy, got the ball in his hand. He's certainly been fired up so far in this tournament. 3 for 12 is his best return, if I'm not mistaken. See what he can do. Good first up, nice rhythm, good pace, good carry. Yeah, loves the limelight, likes to be in the thick of things. The only problem is very shy of the camera. See how he goes about building his first half and over.
Same spot again. It's dragged as a bottom edge. There is protection, so that's just the single. So he's not going full tilt at the moment. That one a couple of kilometres per hour quicker than the first. These two sides, the table toppers, a very different approach with the bat. Bastali very adept at spotting technical problems and how to go about an innings, but GFS Sindh have a totally different approach to what Northern have. Northern have a modern day T20 approach that you, from ball 1 to ball 120, you go after the bowling. It's a nice bouncer. Good stare as well. Beautiful direction. A little game on here. Haider Ali's a key player, clearly. He's got him in his sights. Yeah, and Dhani will know that they're coming after them. He likes a challenge, and he'll test out that back of a length all throughout his bowling stint. That might just be sort of stay back in your crease. Don't get too excited. That's cracked through the covers for 4. That is a beautiful shot. Wow. Magnificent. Well, if you wanted him back in the crease, that's not the ball to bowl. A long half volley, well, Haider Ali, perfection this. Cover drive, way through the ball, power, just a cheeky little stare back. I like this little head-to-head. It'll be quite fun, this. Haider Ali's not going to back down. He's going to look to play his shots, as he always does. 2 balls left in Dhani's first. And he's got him. There's the recovery. And away go the celebrations. Definitely won that battle. And the celebration tells it all. Outside off stump this time, a little wider, a little shorter. Square drive not working. Sarfraz accepts the catch, but Dhani is off. Spectacular celebration, the over, theatre. I'd be worried about Hasnain if I was him. And Ali goes for 11. That is a big, big wicket. 44 for 2. Right, so 2 wickets down, and Ahmad Wasim now at the crease. Ahmad Wasim is a key player as well. He's always a key player. He's got the ball in his hand. He's got an average of 18, which means he doesn't score big scores consistently. Strike rate of 125. Best of 64 only. And he is in the gun. There's a slip in position who, if he takes another step back, he might have to pay to get back in the ground. Dhani is running in and bowling quickly. Last ball of the over. It's leg side. There is protection there, but he's hit it well, and it's gone for 4. So disappointing end of the over. However, he did pick up the wicket. Really important wicket. 9 off the over, 48 for 2.
That's a bit interesting, that dugout there. You've got the captain, Shadab Khan's got the pads on, got the skins on, and there's Asif Ali hasn't got the pads on. That's the boundary. With Dhani's pace, if you're offline slightly, you're going to travel. Roman Reis, on the other hand, this is a good combination because he'll mix it up. He's a wily bowler. I like the way he goes about his task. Reis. Also like the way Dhani goes about his task. I love this energy. He's a travelling reserve. I know that for the World Cup. Tell you what, I might get him off that bench. He really is fired up. He's one of those blokes who seems to make a bit of a difference when he's got the ball in his hand. That's what you want. The celebration gives Imran Tahir a run for his money. Nicely bowled. Let's have a look at this little battle between Dhani and Haider. That was that short one, and followed up with a big stare. Haider didn't seem too bothered. Next ball, that smashed it through the covers. A little bit of a stare back at the bowler, nonchalant stare. And that was the very next one, the neck, and it all happened. That's a beautiful shot. Running off the face, the open blade, 4 runs. Clever cricket. Just placed it, edged it past. Too fine of that deep fielder. He's worked one leg side, which has got to the fence pretty fine, and now offside. So using the pace. So there are times on this pitch that it doesn't quite come onto the bat. We have seen a couple of wonderful shots throughout this game. Someone like Reis is one of those guys who might just stop a little bit from time to time. So you might just need to just check him a little bit. Now there's just a bit of thunder around the place we're hearing. Hopefully there's not going to be any interference with bad weather. There are storms in the area. There's a quick single taken. There's a cyclone actually, which is affecting some areas of Pakistan very badly. Expected to hit some areas tomorrow badly. We hope people are going to be okay. Ralph is getting a little bit of treatment. Balochistan is one area I understand in the eye of the storm, so to speak. Karachi, let's hope they're okay, and other areas as well, obviously. Let's hope we don't get too much of it here in Rawalpindi. We're worried about other parts of the country, obviously. End of that over. 8 from it. 56 for 2. That's the end of the first 6 overs, so there's the signal for the end of the power play.
We just want to let you know about the broadcast, of course. There's the television streaming as well. Now, if you want to have a look at some HD TV on the YouTube channel, jump on that. The pictures are terrific. I was having a look earlier today. And also on the Facebook page, same. High definition, HD quality. Very, very clear. You'll enjoy that, I'm sure. हल्के हाथ से करना पड़ेगा हाँ शाबाश ठीक है जाहिद One thing's for sure, that this northern batting will not take a backward step. They bat quite deep, they bat quite long, they'll take every bowler on. So Zaid Mahmood at the moment will have a chance because they'll come after him and he'll be in with a chance of a wicket. Only one, Zaid. चलो ठीक है Certainly a buzz with this game at the moment. Lots of enjoyment out there. Buzz in the middle as well. Just half shout, was pitching well outside the line of leg stump. It was the wrong one. Very well bowled, ठीक है Zaid. Anu, bahar रहना. Still very locked away, same stage. Sindh were 58 for 1. Bowler. Didn't run the first one particularly fast, but maybe they're concerned about the arm. Now Sarfaraz always looks to Zaid to get him a breakthrough. He's already got 7 in this tournament, and we wanting him to make inroads. Good stuff from Mahmood. Now Northern, we want to break the shackles here. 4 runs only with 1 more to go in the over. They won't want the spinner to bowl his first over and only go for 4. Quick little trim. That's the way you do it. You hand it back to the umpire and he gets the scissors out. That is very well bowled. Really good work. Just conceding 5 runs. 61 for 2. दानिश पांच यहाँ पे वहाँ पे बताओ चलो ठीक है यहीं पे रखो 5 ही रखो टाइट रखिए शाबाश हाँ नहीं ठीक है 116 off 78. 8 wickets in hand now. Ali is out. That's really important as far as Sindh are concerned. Ahani was firing up. 1 over, 1 for 9. However, I think he's now been rested. So he's not coming back from the other end either. Here's a bit of action. Oh, that's a wide, surely. Oh, there's a bit of swing. Goodness me. And the J. Super over. Bit of extra bounce. Oh, just past the stumps. Oh, well done. Nicely bowled. That's out. Well done, boys. चलो ये टाइट रख अभी देख लो अभी तुम्हें जो समझ में आता है ठीक है शाबाश बड़ी हिट नहीं खाना शाबाश मैडी भाई ने सिंगल नहीं भागने Aziz. बस सही है ये ठीक है पीछे जा साउथ Sort of thing that Sarfaraz likes to do. He likes to get the spinners in action, wants to get through a couple of overs pretty quickly. Next time the batsmen look up, if there's a couple of tight overs in a row, suddenly they've snuck through. Might be gone. It's gone. Couldn't have picked him out better. There's the smile. The bowler is very happy with that.
Danish Aziz, he's picked up an important wicket. They didn't need to lose that at this stage. Yeah, almost a bonus. Short delivery, he could have pulled this anywhere. And he's hit it flat and straight to the man. Didn't have to move a muscle. Hassan with the catch. GFS Sindh with the wicket. And they're back in it big time. Danish Aziz strikes in his very first over. Nasser Nawaz out for 27. It's 62 for 3. Look at this rain now. This is at the fourth of the wicket. That is the last thing, of course, that Northern wants. You don't want to lose a wicket when it's starting to rain. So that's going to really hamper things as far as the Duckworth, Lewis and Stern is concerned. Players are leaving the ground now. 5 wickets constitutes a match in the second innings. Both teams 5 wickets, 5 overs. That's the wicket that's just gone down. Hasnain's taken the catch. So that is really disappointing for Northern. It's the last thing they want to do. Suddenly things are going to get, or go south actually, on the Duckworth, Lewis and Stern. What do you got there, Baz? Well, according to us, it's 65, the pass score, when 3 wickets have fallen. So they're 3 runs behind. Before the dismissals, they were 3 runs ahead. Now they're 3 runs behind. But don't trust us, because this is given to us by a statsman, Mazhar Arshad, so I'm not sure about that. Anyway, according to us, they are behind 3 runs. So that's fascinating. So what you're saying is they were ahead, but then the wicket put them behind. So the wicket could cost the game. Yeah, the wicket made it a lot more sterner. Oh, the ground staff have decided to duck under there as well, by the looks of it. Oh, there we go. It's Selfie. Selfie's giving him a hand. That's helping with the stump mic. Well done, Selfie. Right, well, that's disappointing. Oh, the rain just started to... Is it easing off a little bit? No, it started to just be a little bit the same. I think it hasn't changed much. This wasn't forecast at this stage. It was forecasted a little bit later than this. But as it is at the moment, halfway through the 8th over, 62 for 3. And that dismissal is potentially really bad news, as they're going for 27 at exactly the wrong time. And the important part of that bowling is that Dhani got a wicket with Danish Aziz. That wicket might just prove to be the difference. 62 for 3. Should have been 65 if they'd lost 3 wickets. If the match doesn't continue, well, GFS Sindh will win and stay at the top of the table. Let's not forget that performance from Mahmood. Got the 1 over, going for 4 runs only as well. So the spin into the game and making a bit of a difference. Here's a look at the highlights from the start. So the runs that were scored in the power play. That was a lovely shot for 6. Really nicely played. With a thick outside edge down to that vacant third man region. That one just going down to fine leg as well. So this one was popped up in the air, and the first wicket went down. Hasnain, he'll be delighted with that. Grace getting a little bit of treatment as soon as he arrived. That was a great shot. Right out of the screws from Haider Ali, that one. Beautiful shot. Haider Ali through the covers. Looking for that big drive from that wide full delivery, nicked it. And he made a bit of noise. Opening the blade, that was intentional. And this is the one that might cost the match. We'll have to wait and see. Big smile from the Sindh players. They knew the plan. But spinners in the game quickly. Well done to the captain, Sarfraz, for doing that. And a good over from Mahmood, and then that wicket suddenly happening. So there's a look at the match summary. Sindh 176 for 7, Shazil 64 off 43, and Sarfraz 26 off 18. That was good work. Shadab 2 for 33,
The pick of the bowlers was Aris Ralph, on for 22 off 4 overs. And Northern in reply at this stage, halfway through the 8th over, 62 for 3. Nasir will be kicking his kit around, I reckon, in that change room. 27 out off 19. Ahmad is 13 not out. And Hani has picked up the 1. Hasnain's picked up 1 as well, and Aziz has also been successful. So Northern at this stage need 115 runs off 75 balls. We think if we don't start again, that game is going to be going to Sindh. However, I wouldn't go too far away, because you need to keep an eye on proceedings, as the points table is going to be important here. Let's have a look. It's 1 versus 2. It's a huge clash. So there's a bit of a swap could happen. If Northern get up, they get 2 more points, so then they go to number 8, so then they'll go to the top of the pops. But we'll have to wait and see, because it really is a crucial game. The net run rate for Sindh is important at 0.95. That's impressive. And KP at 3, Home City Central, Punjab at 4, Balochistan, who got up early today in their second victory, at number 5, and ATF Southern Punjab are bringing up the rear. Okay, so it is still raining, but as I said, just keep an eye on things from time to time. Rest assured, when and if, and I'm going to say when actually, we do get back on the park, we'll bring you the live cricket. And of course, T20 cricket is always a great deal of fun to watch. We'll see you then.
Okay, so there's a look at what has happened, I'm afraid, and I have said happened because we are not getting any more play. Unfortunately, halfway through the 8th over, the heavens opened, and opened a lot. We had some torrential rain actually for a while. 62 for 3 it was. Ahmad not out 13 at the end. Nawaz not out naught. Didn't face a ball because Nasir got out the ball before they went off, and that has been very costly. 27 he made. If we look at the bowling, there wasn't a great deal of action from too many. Hasnain, a couple of overs, picked up 1 wicket, 1 for 19. Reyes, 2 overs, none for 16 off his overs. Dahani picked up 1 for 9 off 1, so that was quite exciting. And Danish Aziz, he's the man that picked up the important wicket, 1 for 1 off half an over. Okay, here we go with a match summary. So Sindh batting first, 176 for 7 it was. Shazil played really nicely for 64 off 43. Shadab a couple, but went a little bit expensive, 2 for 33 off his 4. Asad 2 for 36 off 4 overs. Musa 2 for 48 off 4 as well. Ralph was outstanding. Harris Ralph 1 for 22 off 4. And Northern in reply, as I said, 62 for 3 it was, and losing that wicket at the wrong time. And right at the bottom, GFS Sindh won by 3 runs in the Duckworth, Lewis and Stern method. So what's that done to the points table? Let's have a look. 2 points on offer, obviously, for GFS Sindh. So they're still on top. They've got 8 points. That net run rate has improved just a little bit, not too much. And Northern are at number 2. They've got 6 points still, so they're sitting pretty. Net run rate's okay. And Khyber Pakhtunkhwa third. Home City Central Punjab. Balochistan, who won earlier today, and ATF Southern Punjab, who went down earlier today, are still on the bottom, and they haven't got any points at all. Okay, let's go downstairs for the presentation with Sikandar. थैंक यू हेजी। और मैच नंबर 14 का रिजल्ट जो है वो डीएलएस के थ्रू हुआ, 3 रन से जीएफएस सिंध ने ये मैच जीत लिया। आज की सेरेमनी सबसे पहले मैं वेलकम भी करूंगा और थैंक यू भी करूंगा उमैर जहीर साहब का ऑन बिहाफ ऑफ होम एज अप्लायंसेज। वो यहाँ पर आए, मौजूद हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद मैं इनवाइट करना चाहूँगा नासिर नवाज को। 27 रन बनाए 19 गेंदों पर, और ये है हमारे आज के होम एज अप्लायंसेज के मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग प्लेयर। 15,000 रुपये का इनका कैश अवार्ड। बहुत उम्दा परफॉर्मेंस नासिर नवाज की, अच्छा स्टार्ट दिया नॉर्दर्न को। उसके बाद बारी है आज के प्लेयर ऑफ द मैच की। उनको मैं इनवाइट करूंगा शर्जील खान। बहुत ही शानदार इनिंग्स के लिए अच्छा स्टार्ट दिया जीएफएस सिंध को। 43 बनाए 25 गेंदों पे। ब्राइटो पेंस फैन ऑफ द मैच बॉल साइन करेंगे। साथ ही साथ वो रिसीव करेंगे पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच ट्रॉफी एंड कैश अवार्ड 25,000 रुपए का। शर्जील से बात करते हैं। शर्जील, अच्छा नॉक रहा, फॉर्म अच्छा लगा हुआ है। जानना चाह रहा था कि किस इंस्ट्रक्शन के साथ आते हैं आप? कोई पावर प्ले में माइंड में स्कोर सेट किया हुआ होता है कि यहाँ तक लेके जाना है टीम को? हाँ, देखिए, हमेशा से मेरा ये है कि मैं हमेशा से अटैक करता हूँ। मेरा नेचुरल गेम अटैकिंग है, तो कोशिश करता हूँ कि पावर प्ले में जितना मैं अपने आप को कैच कर सकूँ। और अल्लाह का शुक्र है, फॉर्म अच्छी लग रही है, बॉल अच्छा बैट पे आ रहा है। तो बीच में 2 मैचों में 3 मैचों में सेट होकर आउट हुआ था, कोशिश कर रहा था कि इनिंग लंबी करूँ। तो आज पावर प्ले तक जब मैं खेलता रहा, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने टाइम लिया। पावर प्ले का एडवांटेज तो होता ही है आपको, ऑफ कोर्स, हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। क्या आप अपना गेम चेंज करते हैं छठे ओवर के बाद, या आप वैसे ही कंटिन्यू करना चाहते हैं? बस फिर मैं देखता हूँ कि किस बॉलर पे अटैक करना है, किस पे डिफेंस करना है। तो कोशिश ये थी कि आज मैं स्पिनर्स को थोड़ा सा खेलूँ, उन पे थोड़ा सा अटैक करूँ, और बस उसी में थोड़ी सी सक्सेस मिली फिर मुझे। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप जीते अवार्ड प्लेयर ऑफ द मैच का, एंड थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग अस। थैंक यू शर्जील, द प्लेयर ऑफ द मैच फॉर हिज ब्रिलियंट नॉक ऑफ 43। अब बुलाऊंगा मैं लूजिंग कैप्टन को, नॉर्दर्न के कप्तान शादाब को, कि वो आए हमसे थोड़ी बात करें। शादाब, टीम की परफॉर्मेंस ओवरऑल तो बहुत अच्छी जा रही है। आप दूसरी पोजीशन पे आज अनलकी रहे कि बारिश की नज़र हो गया गेम, लेकिन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो आपने कुछ नोटिस किए हों कि हम इसको और बेहतर कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिकंदर भाई, मेरे ख्याल से कैचेस विन मैचेस जो बात है वो, क्योंकि हम शिजीबे का उस टाइम कैच पकड़ लेते तो कुछ और ही सिचुएशन होती, और फील्डिंग में भी हम लैप्सेस कर रहे हैं। एज ए यंग कैप्टन और यंग टीम का कैप्टन हूँ, तो यंग टीम सिर्फ एज से नहीं, वो काम से दिखाई दे, और उसमें मुझे लगता है कि हम फील्डिंग में बहुत लैप्सेस कर रहे हैं। तो उस वजह से वो पूरे टूर्नामेंट में आज हमारा 5वां मैच था, और 5वें मैच में हर मैच में हमने कैच ड्रॉप किया, तो वो कॉस्टली हो सकता था, और आज हुआ हमें।
उसके अलावा वैसे आपकी जो बॉलिंग ऑप्शंस हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। ऑफ कोर्स सब तो नहीं करा सकते बॉलिंग। आपने 3 स्पिनर्स के साथ अपना बनाया लाइनअप, लेकिन कराया सिर्फ 2 से। सिकंदर भाई मेरे ख्याल से आज जो प्योर रावलपिंडी की पिच होती है वैसे खेल रही थी, तो मुझे लगा कि क्योंकि स्पिनर का स्पिन नहीं हो रहा था, लेकिन नवाज़ को आज उस बॉलिंग नहीं कराई क्योंकि फास्ट बॉलर का थोड़ा अच्छा हो रहा था। तो कोशिश यही थी क्योंकि जिस तरह के पिछले मैचेस में हो रही थी, ग्रिप हो रहा था, तो स्पिनर हम तीनों ही बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन आज फ्लैट पिच था तो इस वजह से नवाज से बॉलिंग। चलिए, हार्ड लक टुडे एंड गुड लक फॉर द गेम्स टू कम। थैंक यू सो मच। शादाब कप्तान नॉर्दर्न के, अब मैं बुलाऊंगा जीएफएस सिंध के कप्तान सरफराज को कि वो आके हमसे बात करें। याद रहे डीएलएस मेथड पे 3 रन से आज जीता है जीएफएस सिंध ने। जीत होती है जैसे भी हो, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होंगे जो आप चाहेंगे कि और बेहतर से बेहतरीन हो जाए। जी बिल्कुल, डेफिनेटली, और बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। जितना भी आप जीतते रहें तो कोशिश करेंगे हम जो हमारे एरियाज़ हैं उनको और बेहतर से बेहतर करें। बैट्समैनों से बात की कि भाई 30 रन पे जो बैट्समैन हमारे आउट हो रहे हैं उनको कोशिश करें 50 में कन्वर्ट करें। शर्जील से आज अच्छी इनिंग की रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बैटिंग करी। मैं चाहता हूँ कि अगर वो और लंबा भी खेल सकते हैं ज़रूर खेलें। हम देखते हैं मैच जब आपकी टीम बॉलिंग करती है, पावर प्ले लगता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा बिट ऑफ रन्स चले जाते हैं, इसको और कंट्रोल किया जा सकता है, या आप फील करते हैं कि इतने रन तो हैं यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल, हमें थोड़ी सी जो है ना पावर प्ले में अपनी बॉलिंग जो है बेहतर करना पड़ेगा। अच्छी चीज़ ये है कि हमारा जो कवर हो जाता है कि हम उस पर आउट कर लेते हैं, विकेट मिल जाती है। आज भी हमने ज़रूर 55 रन दिए, लेकिन हम 2 आउट किए। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें बेहतरी की गुंजाइश है अभी, और पावर प्ले में और बेहतर बॉलिंग करनी पड़ेगी। बारिश की पहली बूंद से पहले 1 विकेट मिल गई, काम हो गया। बस ये है, क्रिकेट बाय चांस है, और यही होता है कि बस 1 विकेट ने सारा गेम जो है हमारे हक में बेहतर कर दिया। आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए हसनैन को कि उसने वो कैच पकड़ा, बड़ा इंपॉर्टेंट कैच था, तो कुछ भी हो सकता था मैच। तो आई थिंक क्रिकेट बाय चांस है बिल्कुल। चलिए, जीएफएस सिंध ने अपनी टॉप पोजीशन बरकरार रखी हुई है। गुड लक फॉर द गेम्स टू कम। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फ्रॉम द प्रेजेंटेशन। Sikandar, thank you very much. Right, let's have a look and see what's happening tomorrow. Now, this is going to be interesting. Balochistan, I should say, are up against Khyber Pakhtunkhwa, and that is the game tomorrow afternoon. So we're on air at 2:45 local time, and then the game in the evening should be an absolute beauty. What about this? GFS Sindh versus Home City Central Punjab. Former captain, current captain. And that's at 7:15 local time on air, so you won't want to miss that one either. So we've got a couple of big games again tomorrow. Make sure you're with us. I hope you enjoyed all the action we had today. Pity about the rain. Well, that's what happened in the end, and unfortunately we didn't get the end of a really close game as we thought it was going to be. Anyway, thanks for being with us. We'll look forward to your company tomorrow.